Hello everyone, am I audible? Yes, Shrishti, you are audible. Yes, ma'am. Yes, ma'am, you're audible. Hello, am I audible now? Yes, ma'am. Yes, You ma'am. are. Yes, Shrishti, you are Yes, audible. Yes, ma'am. ma'am. Okay, sure. I wasn't able to hear anyone of you, that's why. Yeah. So, first of all, welcome everyone to this wonderful evening. I hope results आने वाला है, so all the emotions, anxiety, nervousness, and happiness to explore new things, सब कुछ एकदम mix up होगा. So for time being, जब तक अभी ये session शुरू है, I request you all कि ये जो results का anxiety है, results का pressure या anything that you are having in your mind, leave it aside and just open your mind and listen to the speakers because they are all eminent in their domains and they'll be guiding you regarding what exactly the particular work that has to be done in each and every domain. So, guys, I welcome you all to this wonderful evening and the session that is conducted by my student club. And I would now like Padam Bhansali to please take forward. Hello, everyone. So, first of all, thanks for tuning in on Sunday for this session. We'll be trying to make the best out of it for all of you. And especially what you need the right now is an all the best from Team My Student Club. All the best for the results, and don't worry, it will be the best. Uh, your efforts shall not go unnoticed, is my view. So,
first, in the initial part of the session, I just want to give a basic overview at what we are doing at My Student Club. We are a student community website. Basically, we are a social networking platform for students wherein students can chat, connect, and interact with each other. Think it of as we have LinkedIn for professional life, we have Instagram, Facebook for our social life. We are trying to build something for student life, जहाँ पे आप अपनी queries अपने seniors से sort कर पा रहे हो. If you have used LinkedIn, you must have got an idea how helpful seniors are when you are deciding on your job and on your further journey. So that's the same thing we want to provide access to in the early student life itself. कि आपकी जो भी queries है related to academics, you can just get them answered in your student from your seniors because they are the best persons than relatives. Just a moment, I'll take the screen. Yeah. Is my screen visible? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So we have, this is our website, mystudentclub.com. You can come in here and ask any of your queries and get answered by the seniors. Like any query, we are there for you. We are working for you. What we ultimately want is to see you succeed. So that's one thing. Another important point I want to make is recently we have seen that there is a backlash going upon on other clubs who are taking paid articleship sessions with large amounts like 10 days of sessions, 10 days of masterclass wherein they are charging 10,000 rupees or so. So at My Student Club, we are trying to solve that for you all. So we are introducing the Articleship Masterclass for you all. Basically, this masterclass will prepare you completely on what all you can expect in articleship interviews, and not just for the interview process. It will be preparing you for the next 3 years, next 2 years of your journey now. Basically, this would be a 10 days course and we need your 20 hours for this, and we promise you ki after this you won't need anything else. Your 2 years would be so good. Like we are preparing you for the next 2 years and we are preparing you for the next 2 months which are going to be hectic. And most importantly, these 10 days we will be covering basic of articleship. We will be conducting group discussions among you all because that's a part of Big Four interviews. We'll be helping you with resume building, email etiquettes, LinkedIn masterclass. We'll be helping you elevate your soft skills. We'll be having you master MS Office basically, wherein MS Excel, Word, and PowerPoint. And what we want to do is we don't want to make it just a lectureful session wherein we are just going on speaking. We are bringing in speakers who will be guiding you. We want to make it more of interactive kind. So whatever you have learned in all these days, you have to implement it in competitions and interactive activities we'll be conducting. On day 7, we'll be having a Shark Tank competition wherein you'll be divided into teams and basically given prizes. The winning team gets the prize, which is so you have to prepare a financial model. You have to prepare a PPT for your presentation for your page, and then we'll be helping you with interviews. We'll be conducting mock interviews for you. Basically, we are covering everything up for you in these 10 days. So that's the plan we have. Shrishti, Purva, and every member of Team MSC is there for you. But the thing is, this is already being conducted by some of the clubs and they are taking very high charges, which is not at all pocket friendly for us. We are articles, we have not started earning, and we understand your concerns. At My Student Club, our first motive is to help you save money and like help you make this. There are some clubs like KGR, they are charging 11,800, Thinking Bridge 5,000, but we want to keep it less than the cost we are incurring basically. So our cost is coming higher than this to bringing all the speakers, but the 499 is what we have decided upon after discussing with the team. For 10 days, rupees 499, less than rupees 50 per day. That's what it will cost you. It would be from 15 to 24 January. Every day, 9 p.m. to 11 p.m. 2 hours is what we need of yours. On weekends, we'll be expecting 3 hours, but we promise whatever you will be putting in, that would be like much lesser than what we are actually incurring on this. So this is what we planned upon for Articleship Masterclass. And yeah, just a moment. So that's it, guys. Visit us at mystudentclub.com to subscribe for the masterclass, or you can contact us daily. You can contact us anytime at our email ID or through our social media handles.
And see, we understand 499 may be a significant amount for some of you, and we care for you guys. Our concern is only to see you succeed. So if you need a waiver based on your financial condition, we can consider upon that. You can mail it to us, you can contact us, and we will do all that's possible from our end. So all the best for this session. We'll love to see you there, and hope this proves to be insightful for you all. Shrishti, you can continue. Yeah. So thank you so much, Padam. Guys, a question I would like to ask you: how many of you have registered for such kind of other master class that are being conducted by the other clubs? Is there any person? Yeah, you can answer via chats or you can answer via like unmuting yourself. Not right now. Okay. So, do you find the price as the main constraint over there? Yes. Okay, so as Yes, Padam ma'am. already mentioned, so 5499 rupees 10 days के लिए, and we are promising you a wonderful experiences. मतलब जो सारी चीजें other clubs have been offering for the huge higher amount, we are trying to bring in that it with a very low, or you can call it minimal amount. Like 50 rupees भी नहीं होता है it per day. So I request you all to enroll for the course. We all are trying efforts to bring into you, and you will surely see a lot of difference if you join this. And further more details will be put in by chat, like what will be the registration process and everything, but you can even contact upon the number that we will share the file. So I hope you all join in for the course and see you all there. So now, without wasting any much of the time, let's start with our session. So our first guest speaker is Kabir Singh Bawa. Kabir, are you there? Yeah, I'm here. I'm here. Yeah, okay. So guys, before Kabir starts, I would request you all कि जितने लोगों का possible हो यार cameras on कर लो. We all are friends, we all are community. तो पता तो चलना चाहिए कौन कौन है. Okay. So I welcome you, Kabir. Welcome to my student club. You. Thank you so much, Risti. Thank you. So basically, talking about Kabir, he is working as an article assistant in BSR, that is KPMG, into M&A tax and private equity. So, Kabir, I would like you to guide the students and guide them regarding what exactly does the training, like, or the articleship into M&A tax looks like, and what exactly the practical work do you need to do there? Sure. First of all, thank you so much, Risti. I remember doing this with you last year as well, and I had mentioned that Yeah. time that how I wish there was a platform like this when I was looking for my articleship. And so based on that, I would like to tell you all that make the most of this platform. I think uh, if I had something like this at my time, my decision making would have been much more easier. Eventually, I did make the right decision, but it makes it so much easier when you speak to people who've been working in that domain and have the expertise as well. So, and plus, it's very heartening to see 120 people join in on a Sunday evening. Anyways, yeah, a little bit about myself. I'm based in Bangalore, born, brought up in Bangalore. I'm working in KPMG. I've been here for about 16 months now, finishing almost 17 months. And yeah, I'll be sharing my experience with you all today. So, do you want me to, start off, or you want to ask a specific question, and do you want me to? No, you can start off by explaining the entire role that is there and the practical exposure over there. Sure. Okay, so in M&A tax, I would like to categorize the work into three primary categories, right? The first being your basic due diligences, second is the tax restructuring work that you do, and third being your mergers, acquisition, demergers, and share sale transactions and everything else. So a lot of you might not have even heard of the term M&A tax. Just to give a gist, what it basically does, what the department basically does, is that when there is any deal happening, be it a merger, a demerger, or any share investment or a transaction, there are always tax implications, right? And we advise the clients from a tax point of view primarily. We do look at other aspects as well, other financial aspects, but the primary focus remains on taxation and making an tax efficient structure wherein the tax liability is minimal. So, as I said, the first component is the due diligence. This is basically okay, fine. What a due diligence means is whenever there's any transaction happening, let's say there's a startup and they want to bring in new investors.
right? Before they bring in new investors, the investors will hire a consultant to do a complete due diligence on that particular company. And the due diligence will involve going through all the documents, the financials, and the tax documents in particular, and coming up with any sort of bottlenecks or any sort of loopholes that are there in the company structure, which may cause a problem in future. So, as a part of the M&A tax team, we primarily focus on the tax aspect of the due diligence. You look at the returns that are filed over time. I would say this is the most nitty gritty work of the M&A tax domain, where you completely get into the depths. You learn everything about tax, right? You look at TDS sections. You have a complete overview of how a company works as well. And I would say this gives you a complete overview of the industries. For example, in my experience, I've done two due diligences so far, one on an online e-ticketing company and another on a very well-known makeup brand and online makeup brand. So when we do these due diligences, you get to know how those industries actually work, and you go beyond the tax aspect, understanding the revenue streams, understanding how the complete business works from manufacturing to processing and then eventually to the finished goods. Due diligences can be done either when there's a buy side transaction, when the investors want to put in money, or when the investors want to exit as well. And then there's something known as top up due diligences. So what very often we've seen is that companies file IPO papers, but then the IPO doesn't really go through at that point in time, or an investor relation breaks down or an agreement breaks down, but then they come back about a year or so and try to continue the arrangement. So in those situations, we do a top up DD, wherein you're not completely going into the depths of the company, but rather just an overview of the previous due diligence that was done when the agreement was being signed previously. The second aspect of M&A tax is the corporate restructuring. Now, this personally is my favorite bit. This is the most interesting and the most challenging one as well. A lot of companies, a lot of startups in particular, have their structures in such a way where the holding companies are based out of India, be it in Singapore or the US or in countries like Mauritius for that matter. And eventually, once the startups kick up, once they turn profitable, most startups prefer to change their holding company structure, change the base location to India. And of course, changing this from different countries would involve setting up new companies, transfer of shares from one investor to another, and that in particular involves a lot of tax implications. So our job there is to come up with a tax efficient structure wherein the tax liability on the shifting of the headquarters of the company is completely minimal. Now, if I were to give an example of the work that I've done in something like this, so we had this NBFC once, a non-banking financial company, wherein the promoter wanted to raise funds from investors. He had investors lined up, but if at any point I'm not audible, just let me know. I'm assuming I'm clearly audible right now, right? Yes, sir, you're audible. Okay, fine. So yeah. So we had this one transaction where this NBFC had investors lined up, but the promoter, it was a family-held company, wanted his family members to come into the company before the investors came in. Now, if the investors were to come in, they would have to get a share valuation report and issue the shares at that particular value. And if after that, at any point, he wanted to bring in his family, he could only bring in the family at a share value either equal to or more than the value at which it was issued to the investors. So we had to work around and come up with a structure wherein the family could be brought in before the investor actually came in, or in a situation, what we did is made the promoter issue rights shares to the promoter himself. And then after the investors would come in, those rights shares itself would be transferred to the family investors. So again, and this can involve a lot of other stuff as well. Like you have, as I mentioned, the primary work around this is shifting of the base or the holding company from one country to another, usually Singapore, US. And now the third and the most, not the most important, but the most prominent part of it is, as the name suggests, the merger, acquisition, or the demerger. Now, whenever any two companies want to merge, there will be tax implications. There are tax definitions of mergers. What we essentially do is right from A to Z, we take them through the transaction. We come up, there's something known as a scheme document which captures all the clauses, how the assets will be treated upon the merger coming into effect, how the liabilities will be treated, what will be the share capital structure. And this is the most I think this is the most exhaustive part of M&A tax, as in it takes you right from the start to the end. You do everything in this. This involves, dealing with NCLT, dealing with a lot of lawyers and the company. This involves dealing with a lot of company top management as well. So yeah.
To sum up my experience, this has been my experience so far. This is primarily the work that is done in M&A tax. And I think going forward, if you guys have any questions on anything specific, I think I can take that up. Kabir, I would like you to guide them regarding the interview questions that have been asked there. Sure, sure. So the interview questions, right? So now one thing that there's a lot of misconception with respect to the interviews about what can be asked. Now, see, one thing even the interviewer always knows is that you are a CA intern pass out, and at least look, they might ask you something which is not in your inter syllabus, but that will only give you an additional boost. It will not decide whether you get in or not. Primarily, it is the inter syllabus which you have to rely upon for your interviews. All for example, in my interview I was completely asked from my tax syllabus, right? Like 50B slump sale, 43B certain expenses that will be allowed only on payment basis, depreciation, 56 to 7B, or be it 56 to 10. So again, I come back to this, that your tax syllabus should be, you should be thorough with your tax syllabus if you're looking for an M&A tax articleship. And again, they will not go beyond your CA inter syllabus. They might ask you questions about recent amendments. For example, in your case in particular, you'll be getting your results now. I'm guessing the interview processes will start in about 3 to 4 weeks, maybe, or maybe even before that. The budget will come out on the 1st of Feb. So in this cycle, especially, they focus a lot on budget amendments. My cycle was the May cycle, so of course they didn't really ask me any budget questions. But from what I've spoken to my friends and other people as well, that in this particular cycle they focus a lot on tax amendments that come in the budget, especially anything which relates to capital gains. Like for example, I'm not sure how many of you are aware. Last year, there was an amendment wherein section 56 to 7B was made applicable to non-resident investors as well, which was before only for resident investors. So these kind of amendments are key. I would say keep reading when the budget comes, especially read all the tax amendments. And yeah, but again, it all there's no deviation from that for sure. Not audible. Hear you. I don't know if there's an issue with my network or. I too hope that Kabir, you aren't audible. Am I audible now? Yes, sir. Yes, you're audible. Yes, sir. Just give me a Yes, second. sir. I'll just fix my Wi-Fi. Yeah. By the time, guys, you can see and check the chats. We have pinned the website link and the WhatsApp group link and Telegram link. You can join there. And all the other details regarding the registrations for the course of Articleship Masterclass and all, you can find in our WhatsApp group, Telegram group. So you can join in there. Guys, is it better now? Yes, Kabir, it is better. Yes, Kabir. Okay, perfect, fine. So what was this one second. Yeah, what was the last thing? We were on the interview, right? Do you want me to cover that part again? You were at the section 56 something. You were telling about that. The amendment. Yeah. Like capital Yeah, gains. so what I was saying is that in this November cycle in particular, a lot of questions in the interviews are based on the amendments that come in the budget, especially with respect to tax, in M&A tax, especially capital gain amendments. For example, last year, as I was saying, there was an amendment in section 56 to 7B, wherein the section became applicable to non-resident investors as well. And that was asked in a lot of interview questions in M&A tax. Yeah, that if in this cycle in particular, make sure you're reading up on the budget, especially tax amendments, for sure, definitely. Okay, and how's the work pressure there? Like, is it able to manage the entire study? Like, how is your routine? How do you find time for studying? Okay, so one thing with M&A tax is there's no season for us, right? It's not like you're working on a seasonal basis or any October filing. It's always on a deal by deal basis, right? That was what I was told going into it. It's on a deal by deal basis, so it'll be chill throughout.
But whenever any deal comes in, it's always on fire. So you have to, work on it at that very time. But for me, it's not been very hectic. Like, I would say that it's much more manageable than other profiles, because when you're working in any other profile, you'll usually have seasons wherein you're working till late for sure. Sometimes it's 2, 3 and all. I have had those instances maybe once or twice in the 16 months I've been here so far. So it's been manageable for sure. And again, I think it's always about the dynamics you have with your team. That look, when I have to study, I'll study. When there's not much work, I can study. But when if there's something is on fire, that's okay. I can prioritize working at that time and then, go back to my classes later. But I would say that you have to, sort of stomp your ground right at the start. Your studies always have to be a priority. It doesn't matter what profile you do your articleship in. At the end of the day, you have to qualify as soon as you can. And I think your focus should always remain on your study, especially after the first 5 to 6 months of your articleship. Correct, absolutely correct. So, are there any other prerequisites or any other skills as such required? Okay, so off late I've been seeing a lot of talk about whether a CA inter student or a CA final student with one attempt versus multiple attempts. I think attempts in M&A tax, especially attempts do matter, right? It matters whether you like it or not. It is the hard truth that they prefer first attempters, and they prefer in KPMG. Furthermore, they prefer people who have scored good marks. And I think again, that's why I say your studies always have to be a priority, because even post qualification, wherever you go, your marks will be looked at, your attempts will be looked at more often than not. So focus on that. Like I would say that if try to like clear in your first attempt, but beyond that, and I think your communication skills become very, very important. There were technical questions that I was not able to answer in my interview, but I think what got me through was my ability to communicate well, my ability to be. I was fluent with my communication, and I think that is very, very important, because you're going to be dealing with people not just in India, but outside India as well. You're going to be talking to clients abroad. You're going to be dealing with a lot of high level stakeholders. You're going to be dealing with a lot of top management. So you need to be able to communicate. You need to be able to put your point across. And I think that is more important than your technical bit as well. Great. Okay, so Kavi, now I think we'll open this for audience, and I can Yeah, see two of the hands being raised. So, Kashish, sure. you may unmute yourself. Do the big fours provide leaves like for BCom exams as you are from different city? Uh, okay, so for I'm not really sure, because I'm born brought up in Bangalore. So from what my experience is, that they usually do allow you at least those particular exam days. But again, if you're a different city, I'm not sure how the dynamics will be. I think it will depend on a lot of things, like what's the season. If you're an audit, it'll be difficult in March, April, May, and April, May, June, I'm guessing. So I think it'll depend a lot on that as well. If you can work from home, if you have to travel to a different city, I think that will again, it'll depend on it's a team to team thing. There's no specific rule as such in any big four. Yeah, and to add up in your question, Kashish, I would like to tell that some of them ask you to take the transfer to the particular location of your college. Like if you are into Mumbai, you are doing articleship into Mumbai, and you are having your like college in some other of the city, then they will ask you to take a transfer to Mumbai college, any of the college. Okay. Yeah. Okay, Raman, you may ask. Yeah, so after result, if I apply for articleship, so in how much time can I expect a reply from Big Four? Because I should know the amount of time I will get for preparation of my technical interview. Okay, so I think again it's a little subjective thing, but how I'd like to break it down is it depends on the domain you're applying for. More often than not, from That my experience at least, uh, they hire like the number of articles they hire in audit versus tax is very different. The very few articles are hired in tax as compared to audit. So by default, you have to look at your profile, and you have to ask yourself that do I fit this criteria? If you feel you do, I think you should definitely wait for it. But at the most, I think after giving in your resume, maybe 2, 3 weeks at most. And I don't, because a lot of the good mid-sized firms, they hire very quickly after results come out. Like I remember in my attempt, the top mid-sized firms in Bangalore were done with their hiring within 3 days of the result, and I had not applied anywhere. So I think that is one thing you have to be careful about. Uh,
But again, just keep applying it, keep giving as many interviews as you can. It'll only prep you up for the Big Four, which the interviews are slightly harder as And compared to other firms. and if I get a reply from them, so in how much time can I expect the real interview after that? Because the location to which I have applied, it is far from my house, so it will take me 1.5 days for traveling by train. So should I relocate earlier on? If it's possible for you, maybe it might not be a bad idea to just stay in the city where you want to do your articleship for a couple of weeks around that time, so that if they ever call you in for an offline interview, it will be easier for you to get there. Because over the last couple of attempts, I've been noticing that they are moving back to offline interviews. In my attempt, it was still online interviews, but there are a lot of offline interviews happening now. So if it's possible, if it's not too much of an issue, I think that's definitely something you can do. Plus, you'll be able to explore the city as well. You're eventually going to be living in that city for 2 to 3 years, so it'll give you a good amount of time before you start your work to go around the city, explore as well. And should I do TDS rates, etc., also for my statutory audit? Because I left that chapter for my inter preparation, and I Uh, don't think I have that much from what time. my friends have told me, they haven't really been asked tedious questions in stat audit, but I think someone who's doing their articleship in stat audit would be better equipped to answer that particular question. Okay, thank Yeah. you. Raman will be having a speaker from Start Audit domain, so they'll surely cover your question. Okay. Yeah. Krishna, you may ask. Could you suggest few sources to stay updated with the latest tax amendments for the C intermediate students? Sure. I think the best one is Taxman, right? Their website, but most of the articles in their website are only available for subscription on to subscribed members. Then there's a website known as Tax Guru. Beyond Okay. that, I think within a 3 to 4 days of the budget, all Big Fours put out a flyer on their website. Capturing all the amendments that have come in particular in tax. I think keep looking at those, and beyond that, newspapers, just keep reading as much as you can. And yeah, as I was talking about newspaper, I think reading newspaper, it might sound like an old school habit, but I think trust me, it'll help you a lot in articleship, a lot. And I'm not exaggerating this. This cannot be understated. Sorry, this cannot be overstated. That newspapers, this thing will help. Reading newspapers will help you a lot. Thank you. Okay, Sachin, you may unmute yourself. You told that in M&A domain, Big Four usually prefer to go for first attempt guys and who scored good marks. If we doesn't clear in first attempt and not have that much good marks, then what we can do to get in M&A tax and finance? Sachin, can you come again? I wasn't able to hear you clearly. Sir, if we can't clear in first attempt and not score high good marks in Yeah. trust, and what we do to get in M&A tax and finance domain, where they usually prefer this type of first attempt and high marks. Okay, so I think as I think your extracurriculars, look, during articleship, your extracurriculars don't matter that much, but I think that is something that will give you an edge for sure. And if you're able to get your resume shortlisted, if you do get through the interview, you'll have to be much better than someone who's cleared in the first attempt, because if you're the same, they will hire the one who has cleared in the first attempt. So have that extra bit of technical knowledge, show the interviewer that okay, like I might not have cleared in the first attempt, might not have gotten the best marks, but on the job, I'm the better guy, or I'm the better one for the job. Soumya, you may ask. Um, Hi, sir. I just want to ask, can you tell more about like how to apply in Big Four firms, like whom all to approach, etc. Sure. First of all, please don't call me sir. Anyone who's going asking questions going forward, it's just Kabir is fine. But anyways, on look, I think LinkedIn is the best platform. There's no doubt about that for sure. Even my articleship was completely through LinkedIn. I randomly reached out to a person in KPMG, and that I want to do my articleship at KPMG. And most Big Fours, after results, they send out this link for a test, right? The first stage of the test to all the internal employees, saying that if anyone wants to do their articleship, you can send this link to them, you can register on that. So I think talk to, like, have maybe know one person in each Big Four and ask them if they have any vacancies, if they have any assessment test links. And yeah, I think that LinkedIn is for sure the best platform. Okay, thank you so much. No problem. We will take two more. Madhumita, you may ask.
So, what do you think are the limitations of doing articleship in Big Four? Okay, that's a very good question. I think first and foremost is definitely that it will be slightly harder for you to start your own firm after doing your articleship in a Big Four. Uh, Simply because you'll be focusing, yes, you'll be specializing on one area in particular. As compared to if you're doing your articleship in a mid-size, you're getting an exposure to everything. Uh, Beyond that, in my personal opinion, there is no limit. There are no, shortcomings or limitations, because the kind of exposure you'll get when you're working in a Big Four is of a different level altogether when you compare it with mid-size. Simply because, when I today interact with people, from mid-size firms, like, I can feel that the exposure I have gotten, the clients that I've gotten to work on, the interactions that I've had is much more. And doing that this early in your career at the age of 19, 20, 21, 22, it'll be a big boost going forward. And plus, if you have ambitions to study further, I think a lot of CAs nowadays are doing MBAs after qualifying. Those 3 years at a Big Four will definitely help you a lot. Okay, but there are some big size firms offering same exposure as Big Fours. So, what's the difference between all those? Those Okay, fine. The first thing is that it's definitely the brand name, right? It makes a big difference. Tomorrow, if you want to apply to, let's say, Harvard for an MBA, they will know what a KPMG is, but they will not know what is like a mid-sized firm. More likely than not, they won't know about the mid-sized firm. So I think that makes one big difference. And as I said, the overall, there's a big difference in the sense of professionalism as well in Big Fours versus non-Big Fours, right? And I think that makes a big difference as well. And again, going for your entire career, that professionalism aspect will be very important. Thank you so much. No problem. Okay, we'll take the last question of Vivek. Yeah, thanks, Srishti. Kabir, can I ask you one question? Does your number of attempt matter if you have a good reference? Okay. I think it will matter lesser if you have a good reference, and it'll also depend on in your domain as well that you're applying for. But definitely, it will matter lesser when you have a good reference versus when you don't, for sure. Is your reference a good reference? Will it be? uh, I mean, if anyone wants to apply to KPMG, for sure, reach out to me after results, either on LinkedIn or WhatsApp. Is a little difficult. Instagram is fine. My Instagram is Kabir Singh Bawa, simple straight. But yeah, you guys can reach out for anything. I'll help you definitely after results for sure. If you want to apply to KPMG, reach out to me. Yeah, thank you. No problem. So, guys, others, मतलब जिनको मौका नहीं मिला है, you can reach out to Kavir on LinkedIn and you can ask your doubts and questions there. Because due to time constraints, we will be restricting this Q&A round here itself. And thank you so much, Kabir, for sparing your evening time on this Sunday. मतलब अभी पढ़ाई भी चल रही है, like 16, 17 months हो गए हम सबको. So thank you so much for coming in here and guiding the aspirants. And I would also like to thank you. It was very good hosting you consequently for the second time. Yeah. So thank you so much for being there. Thank you from the entire team, My Student Club. Thank you so much, Srishti. And about my student club, I think you were we did this last year as well. And the My Student Club thing, guys, it's very helpful. Even if you ever want to do an industrial training, like the industrial training portal is just like I had no idea it's a student run thing, at such a low level. And the industrial training vacancies, if someone announces a vacancy on LinkedIn, within 5 minutes, it's available on the My Student Club portal. So yeah, thank you so much, guys. I think you're doing a very good job. And plus, even the masterclass at just 500 rupees, it's amazing. I was in fact reading this LinkedIn post the other day, talking about how people are charging, as you said, 10,000, 15,000, and monetizing something when people themselves haven't done articleships in Big Four and they're, trying to monetize it. But yeah, I think you guys are doing great. And yeah, I'd love to do this again with you all sometime. Thank you so much. Thank you. Surely, Kabir. Thank you so very much. Thank you. Yeah. So guys, Articleship Masterclass की सारी details it will be given in our Telegram and WhatsApp group. So do join it. And okay, so now moving forward to the session, over to you, Purva. So yeah, guys, we have with us Sashank Gujarati, who is a LinkedIn content creator with the followers of 3.5k and also the LinkedIn Stock Communications Voice.
and he was previously in the TPO Oswald firm in the indirect taxation domain, and currently he's in BDO LLP, International LLP in the international taxation, right? Right, Sashank? Right, So Purna, right, yeah, Purna. and he is also a very active participant in the ICI events. So Team MSc welcomes you, Sashank. Yeah, first of all, thank you to my student club for inviting me and giving me this opportunity to speak in front of these many students. Coming on the point, ICIC event, I'm at BKC only. We are hosting a Youth Fest in KKC auditorium, and I'm at the third floor attending this event. So yeah, So, so Sashank, without taking much of your time, let's start. So, yeah. what exactly does your articleship looks like in the international taxation domain? Like, what practical exposures do we need to do? So firstly, coming on to the practical exposure, before it, we need to understand that what is international taxation. Basically, when a person clears CA intermediate, he knows only two, three domains: audit, internal audit, DT. These kind of stuff like international taxation, forensic, concurrent, they think that these are not the core CA fields. But it's not like that. International taxation is a part of direct tax. The major difference between it is the assessee. Assessee is non-resident in case of international taxation, and because of this, some other rules also applies like FEMA, RBI regulations. You have to see the DTAA benefits also. What are all the stuff? You have to consider all the things. उसके अलावा जो उनके देश में क्या हो रहा है, अपने देश में क्या हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल अपने हियर इन इंडिया वी अप्लाई इनकम टैक्स रूल्स, यूएस में कोई और होता होगा, फॉर एग्जाम्पल अभी यूएई में कुछ नहीं था बट अभी आया है. सो if a assessee belongs to some other country and is operating in India also, then you have to consider the rules of two, three countries. And these all things are based in international taxation. Coming on the other point, that how does the life of article looks like in international taxation in BDO? What type of works does it get? So basically, there are three kinds of works. Firstly, advisory, compliance, and litigation. Talking about me in a very raw manner, as an article trainee, I don't get much of litigation work. Firstly, I'll make you understand okay, what is litigation. Litigation is, guys, you, for example, SSC has filed some income tax return and AO is of a view that you guys have filed a wrong return और ज्यादा income tax भरना चाहिए, तुम लोगों ने कम भरा है. So then he calls you, एक notice issue होता है, then you go in court and you fight with them, जैसे court में होता है. So these kind of stuff come under litigation. As an article trainee, I don't get much sort of work in litigation. But yeah, talking about advisory and compliance, we have a good amount of work. We get a good amount of work. Advisory is like, I found advisory more interesting as compliance as compared to compliance and litigation. Advisory mein, they are, for example, they are having a transaction and they need your advice that how will be paying the tax, how we can save the tax, or is the tax applicable on these kind of deal or not. So these all kind of stuffs are covered in advisory, and compliance is very simple. You need to file the income tax returns, you need to file the TDS return, you need to comply with the rules and regulations. For example, today only today was the due date of TDS return, TDS payment, monthly TDS payment. In the first half of the morning, I paid the TDS for one of my client PG, and then I came here. So basically, there are three types of work: litigation, advisory, and compliance. As an article trainee, you will be getting more of advisory and compliance. Litigation, I can't say much. It is based on team. If your team is like good, they'll give you some work of litigation also. We have more qualified people in our team, so I get very less work in terms of litigation. I get only research work and work papers making. But yeah, advisory and compliance, I get very good amount of work. Yeah, so Shashank, now tell us something about how much is the pressure and how are you managing your studies along with the work? So talking about the pressure and all that kind of stuff, if you are thinking of joining a big firm, be it Big Four, Big Six, or Big Ten, be ready to face like 10 or 12 hours of work on a daily basis. Even in off season, like my office hours start from for an article assistant like me, the basic office hours starts from 10:30 or maybe 11. It goes up to 8 or 8:30 or 9. This is the off season stuff. It may increase during the peak season, and talking about studies, these all the states, all the other stuff like studies and events, all the other stuffs are manageable if you try to manage them.
Weekends are usually off, so I try to cover my studies at the time of weekends. I try to cover my studies at the time of weekends. I took live classes for FR. Those are for 6 hours on Saturday and Sunday. I try to cover at that time. And yeah, it's a bit difficult job to manage all the studies with the office and other events during week also. But yeah, if you are dedicated to something, then you'll manage all the things. You'll get much time to dedicate to all the things, be it events, extracurricular activities, or studies. The thing is how you take on all the stuff. So now that's the reason why you attend almost every event of ICA. Yeah. Yeah. So the next question is how to prepare for the interview and what questions they may ask for this particular international taxation domain. So restricting this topic to international taxation only, what you guys are, what you guys can prepare. Talking about these intermediate students, you will be passing the exam soon. All the best to all of you. So the interviewer knows that the content of direct tax is very limited in your books. So talking about the content which you get in DT book in your intermediate course, you must prepare TDS, deduction, and you must be having a free hand on your PGBP also. They'll be asking questions from 44AB, 44DA, and TDS and deductions are the must. Other than that, capital gain and other sources. You must be preparing these 4 chapters. Other than this, you must be having a basic knowledge of FEMA, FERA, and some RBI regulation, that how currencies are being exchanged, how taxes are being paid. The basic, very basic stuff of RBI regulations, FEMA and FERA. उसके अलावा be it international taxation, be it GST, be it DT, टैक्स के कोई भी केस में यू नीड टू बी अवेयर ऑफ एवरी काइंड ऑफ न्यू स्टफ. फॉर एग्जांपल जनरल नॉलेज जिसको हम बोलते हैं, कोई नया अमेंडमेंट आया हो, कोई नया चेंज आया हो, इंटरव्यूअर वो तो पूछता ही है. बीट इन माय केस, मेरे टाइम पे गेम्स पे जो ड्रीम इलेवन और इन सब का गैम्बलिंग और ये सब होता है, सो एक नया टीडीएस का सेक्शन आया था. उसके अलावा उन्होंने 30% जीएसटी भी अप्लाई करा था. जिस दिन मेरा इंटरव्यू था उस दिन सुबह ही ये अमेंडमेंट आया था और इंटरव्यूअर ने सेम क्वेश्चन पूछा था. So you need to be aware of all the amendments, all the changes which are coming in force. So ये सारी चीजों से हो सकता है. Okay, so next is any particular skill or prerequisites जो कि ऐसा हो जाता है कि ये short take कि interviewer will take that person. So any such kind of skill? See, basically not restricting this question to international taxation only. When you'll pass your CA intermediate examination and you'll apply in a big firm, be it Big Four, Big Six, vacancy will be of limited number of people, but the applicants will be more. So how would your resume outshine others? That's why you will do some courses, some certification, some master classes. Now coming back to the point about international taxation, how you can outshine from others in case of be it DT or international taxation. You can take some master classes from Taxman, Tax Sutra, or Tax Guru. They provide some master classes, or you can take some paid courses. Like there's a organization named as Thinking Bridge. They provide some master class on international taxation also. I didn't took, but I heard of good review of them. So these are some courses. Other than that, you must be having some certification on Excel. Excel is a must. Be it audit, DT, IDT. Excel is a must. Doesn't matter in which domain you are applying. You should be having a good hand on Excel. उसके अलावा a basic knowledge of Tally, ERP, I would say, if you are applying in a mid-sized firm, because this matters a lot. क्योंकि डेटा भी खुद ही को लेना पड़ता है उधर. As much as I have heard from my friends, Tally का भी जरूरत लगता है. और बेसिक जो MS ऑफिस का वर्ड पावर पॉइंट ये तो होना ही चाहिए. मतलब these are तो deemed के you should know. Okay, so Sashank, since you are from Indore and you have come here just for your articleship, right? So, what do you think? Like, which is better, moving to a metropolitan city just to do articleship, or doing it from a two-tier city, or like from their hometown? What's your view? See, in my case, I did hesitate once to come to Mumbai because I knew that I'll be learning a lot of stuff in Mumbai as compared to Indore. I'll answer this question in some points. First point, I always wanted to join my articleship in Big Four or Big Six firm.
and we didn't have any of the big four or big six firm in Indore. So वो point of consideration पहले ही नहीं आता है. उसके बाद टाइप ऑफ वर्क, जो मुंबई में, दिल्ली में, बैंगलोर में इतने सारी कंपनीज है, बड़े बड़े क्लाइंट्स है, इंदौर में उसके आधे भी नहीं है. इंदौर में इसलिए रेफर कर रहा हूँ क्योंकि मैं इंदौर से हूँ, आप अपने सिटी से कंपेयर करें. सो क्लाइंट बहुत छोटे छोटे हो जाते हैं. थर्ड थिंग, professionalism. When I see my seniors doing articleship in Indore, like no offense to them, but I don't find them that much professional as compared to my colleagues who are doing articleship in Mumbai, be it in a mid-sized firm or be it a big firm. The sort of professionalism which Mumbai, Delhi, Bangalore contains, we doesn't have that sort of professionalism in tier 2 or tier 3 cities. उसके अलावा the off-site learnings, जब आप घर से बाहर आते हो, कोई बड़े शहर में आते हो, तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ही सीखने को मिलता है. टॉकिंग अबाउट मुंबई, मुंबई टीचर्स अ लॉट इन टर्म्स ऑफ लर्निंग्स. बहुत कुछ सिखाती है मुंबई, हर तरीके से सिखाती है. सो दैट्स व्हाई. और बचपन का सपना, सबको मुंबई सपनों का शहर लगता ही था, तो दैट्स व्हाई. So, Sashank, now any advice or what are the points you want you would like to tell the audience? What's your See, experience? I'll be giving 2 to 3 brownie points here. Firstly, I'll be telling you how to apply, because most of the people don't know how to apply. I don't know what the previous speaker said on this, but उनने भी सेम ही बोला होगा. See, basically, when you think about a big four or big six firm ना, वैकेंसी बहुत ज्यादा कम होती है और एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा होती है. सो यू नीड टू प्रिपेयर योर रेज्यूमे इन सच अ वे दैट जो भी आपका इंटरव्यूअर हो वो रेज्यूमे से आपको पहले तो सिलेक्ट कर ले. सो कुछ ना कुछ ऐसा पॉइंट उसमें डालना चाहिए जिससे आप आउटशाइन करो. दैट्स व्हाई आई ऑलवेज ऐड ऑन समथिंग कि तुमको कुछ ना कुछ कोर्स एक्सेल से रिलेटेड, या फिर अपना आईबी से रिलेटेड, या फिर डीटी से रिलेटेड, या ऑडिट से रिलेटेड कोई मास्टर क्लास, कुछ ना कुछ तो कर ही लेना चाहिए. ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ्स आर अवेलेबल फॉर फ्री. जेपी मॉर्गन के साइट पे हो गया, मॉर्गन एंड चेस के साइट पे हो गया, स्टैनली के साइट पे हो गया, इवन मोतीलाल ओसवाल इज आल्सो ऑफरिंग फ्री कोर्सेज नाउ. सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, कुछ ना कुछ रेज्यूमे में ऐसा होना चाहिए जिससे आप आउटशाइन कर पाओ. उसके बाद many people when I joined the session lately, but I heard 2 3 questions like reference नहीं है तो क्या करें, बिना reference के हो जाता है क्या, वगैरह वगैरह. So I wanted to tell you guys के someone asked कि अगर मेरा 2 3 अटेम्प्ट लगाओ और मेरा रेफरेंस है तो हो जाता है. सो रेफरेंस का ऐसा है ब्रदर कि अगर आपका रेफरेंस काफी अच्छा है तो फिर तो अटेम्प्ट मैटर ही नहीं करता, यू डायरेक्टली गेट इन. बट समटाइम्स यू डोंट गेट अ रेफरेंस, सो हाउ वुड यू अप्लाई? बिना रेफरेंस के अप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बट देन यू शुड मेक द रेफरेंस. लाइक इन माय केस आई डिडंट हैड एनी रेफरेंस फॉर बिग फोर और बिग सिक्स फर्म, सो आई जॉइंड अ मिड साइज फर्म फर्स्टली. देन आई वर्कड ऑन माय लिंक्डइन में लोगों को अप्रोच करना चालू करा, रेफरेंस बनाए. देयर वाज अ डायरेक्टर इन वीडियो, मैं उनकी पोस्ट में एंगेज होता था. देन आई आस्क्ड क्वेश्चंस के व्हाई आर यू इन वीडियो, व्हाट टाइप ऑफ वर्क यू गेट, आपका टीम कैसा है, वगैरह वगैरह. वी हैड अ गुड चैट. ऐसा आई मेड अ कनेक्शन, गुड कनेक्शन. उसके बाद जब ऐसा लगा कि हाँ कुछ अच्छा कनेक्शन बना है, देन आई आस्क्ड हर कि अगर कोई वैकेंसी हो वीडियो में इंटरनेशनल टैक्सेशन में, सो डू लेट मी नो. एंड बाय गॉड्स ग्रेस उन्हीं की टीम में वैकेंसी थी. तो ऐसे में वीडियो में आ गया बिना किसी रेफरेंस से. मेरे पास शुरू में कोई भी रेफरेंस नहीं था, बट बिकॉज ऑफ लिंक्डइन ओनली आई अप्लाइड एंड आई गॉट इनटू वीडियो. उसके अलावा व्हाट यू कैन डू, यू शुड बी अवेयर ऑफ एवरी फैक्टर विच इज गोइंग अराउंड. कोई भी चीज अगर बीट अपन के पॉलिटिक्स में हो रहा है, मोदी जी ने डिसीजन लिया है, वो टैक्स को कैसे अफेक्ट कर रही है, इंटरव्यूअर कुछ भी पूछ सकता है. सो जो करंट सिचुएशन है, करंट अमेंडमेंट है, उनसे आपको अवेयर रहना चाहिए. वो इंटरव्यू में जरूर आते हैं. और बस आई थिंक दीज आर द ब्राउनी पॉइंट्स व्हिच आई लाइक टू ऐड. Thanks for the brownie point, Sashank. So yeah, now the chat is open for the audience. So anyone who wants to ask, please raise your hand. Okay. So Dia, you may. Hi, Shashank. Hi Diya. I want to ask that why and how did you decided to do articleship in this particular domain? Sorry, can you pardon please?
Yes. Why and how did you decided to do articleship in this particular domain? Like there are various domains in which you can do articleship. Yeah, got it, got it. So yeah, when I cleared my CA intermediate examination, I was very sure that I have interest in audit and taxation only. I don't want to go for finance or internal audit or any other stuff like IDT or forensic. I was open for stat audit and international taxation, be it DT, be it TP or IT. But I didn't got any reference for Big Four or Big Six firm. Then I had to join some other firm in stat audit. But I was open for DT also. So when I got a reference for IT in video, I joined this. But how did I knew that I'm interested in IT, that is a part of direct taxation? When I used to study in intermediate about tax, it used to excite me कि भैया कैसे होता है, कैसे रिटर्न फाइल होता है, क्या प्रोसीजर होता है. एक सेक्शन आया था 44 ADA करके, उसने मेरे को सबसे ज्यादा एक्साइट करा था कि आप ऐसे नहीं ऐसे भी रिटर्न फाइल कर सकते हो. सो दीज आर द स्टफ विच आई लाइक. वो मैंने डिसाइड करा कि मेरे को क्या पसंद आ रहा है. देन जब ग्रुप 2 का क्लासेस स्टार्ट हुआ, इको पढ़ा, उसके बाद एडवांस अकाउंट्स पढ़ा, एसएम पढ़ा. सो एसएम एंड ऑडिट वर द सब्जेक्ट विच आई फाउंड मोस्ट प्रैक्टिकल. मेरे साथ ऐसा होता था कि आई यूज्ड टू फाइंड प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स थ्योरी इन रियल लाइफ एंड थ्योरी सब्जेक्ट मोस्ट प्रैक्टिकल इन रियल लाइफ. क्योंकि अगर तुम देखोगे अकाउंट्स जो तुम पढ़ते हो रियल लाइफ में कुछ अलग ही होता है, लेकिन जो थ्योरी ऑडिट की, एसएम की और टैक्स की तुमने पढ़ी रियल लाइफ में वही होता है. तो आई फाउंड एसएम एंड ऑडिट वेरी इंटरेस्टिंग, बट एसएम में कोई आर्टिकलशिप होता नहीं है. तो दैट्स व्हाई आई चोज ऑडिट एंड डीटी. किसी में भी अच्छी फर्म में हो जाए देन आई एम ओके विद इट. Okay, thank you. वेलकम. Ayushi, you may ask. Ask, do they ask statutory audit questions in taxation interview? No, definitely no. A big no. They don't ask any sort of different domain question. No, if it is interview of stat audit, then you will be having question of audit only. If you are having an interview of tax, then they can ask you about how you will do tax audit. There are some major points that you need to cover, but there's nothing like कि वो तुमसे पूछ लेंगे TOC, TOD क्या होता है या फिर स्टॉक टेकिंग कैसे करेंगे. ऐसा कुछ नहीं होता है. बेसिक आइडिया विच यू स्टडी इन योर इंटरमीडिएट वो हो सकता है अगर इंटरव्यूअर टेढ़ा हो, बट ऐसा कोई नहीं पूछेगा कि ऑडिट का बताओ टैक्स में या टैक्स का बताओ ऑडिट में. ये तो मतलब ये सिर्फ आपका टॉप्स में ही है या फिर मिड्स भी ऐसे ही करते हैं? सॉरी, मतलब ये सिर्फ टॉप फर्म्स ही हैं जो एक का एक में ही पूछते हैं या फिर मिड्स जो हैं वो भी ऐसे ही करते हैं कि मतलब आपको टैक्सेशन का है तो आपसे डिपेंड्स. टैक्सेशन ही पूछेंगे? हाँ, there are some big mid-size firm also, upper mid-size firm जो कि सिर्फ एक particular domain में ही articleship provide करते हैं. The last firm Yes, which I yes. joined was TP Oswal and Associates. उनमें भी ऐसा ही था कि I was doing my articleship in audit only. They asked me questions of audit only. और उसमें कोई दूसरी फर्म भी है जिसके मैंने इंटरव्यू दिए थे जो सारे ही डोमेन में आर्टिकलशिप कराते हैं, टैक्सेशन, ऑडिट, Yes, आईडीटी. yes, yes, yes. तो उसमें वो सारी चीजें पूछते हैं. फर्स्टली यू शुड डिसाइड कि तुम्हें मिड साइज में करना है या बड़ी फर्म में करना है, एक डोमेन में करना है या सारे डोमेन में थोड़ा थोड़ा करना है. दैट्स टोटली योर कॉल. Okay, thank you so much. Harsh, you may ask. Harsh, are you there? Thank you. Am I audible? Yeah, you're Yeah, audible. Okay. Hi, Shank. I wanted to ask, like, if I'm applying in taxation, whether direct taxation or indirect taxation. So, while preparing for intermediate exams, I didn't learn any section in taxation, but in company law, I have prepared and still managed to clear taxation paper. So, in the interview, not learning or mentioning the section will create any impact, or learning it will provide any competitive edge. Or I should See, learn it now. this will definitely provide you an edge. I'll not say edge, but this is a sort of mandatory stuff when you talk about interview. They'll ask you questions like, tell me about section 35D or 94C. They'll ask you directly. And if you don't know what's the name of the section or what section contains, then you'll not be able to give the answer. You get edge in examination if you write the section, but in case of interview, specifically in direct taxation, there's nothing like edge. It is compulsory, I think. And if you are
not learning any section, that you are losing on something. Okay, so I should learn it, I guess. Yeah, you should by heart the section. There are some specific sections. I'll be posting them on LinkedIn post result. You can connect with me on LinkedIn. I have the same name, Shashank Gujarati. I'll be posting many things now about how to apply in direct taxation, how to apply in Big Four, Big Six firm, what are the points to be considered, how to prepare for interview. I'll be giving all the things there. That's great, thank you. And another question I wanted to ask, please. What should be a good answer to why we choose CA as a career? Because we really don't choose CA as a career, our parents choose it, and it's a good decision. But what should be a good answer to that? See, we'll be keeping this in very, we'll be completing this in very short. Don't know about you guys, but talking about me, accounts used to excite me during my class 11th and 12th. And उस time यही होता है कि accounts आता है तो CA कर लो. At that time, I was keenly interested in CUET also, but due to COVID, our exams got cancelled. And मेरे स्कूल वालों ने मेरे को बस 96% दिए थे, तो मेरा DU में हुआ नहीं. So the only best option I had was CA, and that's why I chose CA. Okay. Okay, Yeah. thank you, Sasha. Thank You're you. most welcome. Shreyansh, you may ask. Shreyansh, are you there? Okay, let's take Sonia first. Sonia? हाय हाय शशांक, हाय पूर्वा। Hi Sonia, hi Sonia. Yeah. से ये क्वेश्चन पूछना है कि मेरे मेरे दोनों अटेम्प्ट दोनों ग्रुप क्लियर हो गए थे मई में, और अभी मेरा रेगुलर कॉलेज चल रहा है जो मैं मई में पास आउट करूंगी। तो मुझे अभी आर्टिकलशिप ज्वाइन करने के लिए रिजल्ट वाले डे पे ही रिज्यूमे भेज देना चाहिए बिग फॉर्म्स में, या फिर अप्रैल में ट्राई करना चाहिए क्योंकि उस टाइम पे ही एनओसी मिलेगा? आपका कॉलेज कब खत्म होगा? मई 2024। Then definitely you should apply post May वाला attempt. तब आपको जून तक आर्टिकलशिप मिल जाएगा. पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन ही नहीं आता है जब कॉलेज आपको एनओसी नहीं देगा तो अभी अप्लाई करके करोगे क्या? क्योंकि अभी अगर वैकेंसी निकलेगा तो वो अभी के अटेम्प्ट वालों के लिए निकलेगा जो इवेंचुअली अभी जनवरी एंड तक या फेब तक ज्वाइन कर पाए. एंड सिंस यू आर नॉट एबल टू ज्वाइन, देन क्या ही करोगे अभी अप्लाई करके? अप्रैल में तो एनओसी मिल जाता है ना कॉलेज से। But अगर you मैं only सेलेक्ट told कि your college will not be giving NOC till April ऐसा. एनओसी दे देंगे, वो मंथ अप्रैल के मंथ में देंगे, लेकिन उससे पहले नहीं देंगे। तो फिर क्या ही मतलब निकलेगा? कोई इतना आपको एक्सटेंशन पीरियड नहीं देगा कि आप अभी वो आपको सिलेक्ट कर ले और आप 3 महीने बाद ज्वाइन करो. बट फिर अगर मैं मई की बात करूंगी तो 6 मंथ से अटेम्प्ट डिले हो जाएगा। Then you should have considered this point when you joined a regular college. मतलब I am not the right person to answer this, I think. और अगर मैं किसी रेफरेंस के लिए ट्राई करूँ तो मेरे को एचआर कंपनी के एचआर की मेल आईडी पे मेल नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि मैंने ऐसा सुना है कि दोनों साइट पे तुम्हारा रिज्यूमे 2 बार जाएगा। तो अगर तुम रेफरल के लिए ट्राई कर रहे हो तो फिर वहां से एचआर की आईडी पे मत भेजो। I don't think मतलब ऐसा कुछ मतलब होता भी हो तो I don't know about it, but what I did, मैंने एचआर को भी मेल करा, मैंने रेफरेंस के लिए भी ट्राई करा क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं था. इवेंचुअली ईवाई में आई गॉट कॉल फ्रॉम एचआर ऑल्सो, और वीडियो में मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरा रेफरेंस लगा. सो ट्राई एवरीथिंग, अगर कुछ ना कुछ काम कर जाए तो अच्छी बात है. ओके शशांक, थैंक यू। थैंक यू सोनिया, वेलकम. Tanu, you may ask. हेलो, हाय तनु. Are you there? यस मैम। मेरे को ये डाउट था कि मैं चाहती हूँ कि सीए के बाद एक बैंकिंग लाइन में जाऊँ क्रेडिट में, तो उसके लिए कोई डोमेन मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या चूज करूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं है ना डोमेन में होता क्या है। सी, आपको पता नहीं है डोमेन में होता क्या है. दैट्स व्हाई माय स्टूडेंट क्लब हैज ऑर्गेनाइज्ड दिस सेशन so that you Yes. all guys can know कि क्या होता है क्या नहीं होता है. According to me, you can try in basically banking is mostly related to finance only. As much as I know, कुछ और भी हो सकता है. यू कैन ट्राई इन सम फाइनेंस सेक्टर. बहुत सारी फर्म्स होती है जो फाइनेंस में भी आर्टिकलशिप प्रोवाइड करती है, आईबी में भी करती है. अदरवाइज अगर तुम्हें इतना डीप में या इतना स्पेसिफिक डोमेन में नहीं करने का है, देन यू कैन गो फॉर ऑडिट ऑल्सो. यू विल बी हैविंग नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल्स, हाउ फाइनेंशियल वर्क्स, कैसे ट्रांजेक्शन को ट्रेस करा जाता है.
Audit में if you are not sure, then you should do your articleship in audit. ऐसा I'll suggest. ओके और मेरे को एक क्वेश्चन ये पूछना था कि एक जो प्री रिजल्ट ड्राइव्स होते हैं इंटरव्यूज के, तो उनमें अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि वरना वो 6 मंथ्स के लिए कूलिंग पीरियड होता है ना, वो तो हम दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते। वो तो प्री डेफिनेटली होता है, वो सब में होता है, वो सब में होता है। सो इफ यू आर श्योर कि आपका रिजल्ट पॉजिटिव ही आने वाला है, देन यू शुड अप्लाई। जैसे कि प्री रिजल्ट होता है तो वो सिलेक्ट पहले ही कर लेते हैं, फिर रिजल्ट के बाद सिलेक्शन शुरू होता है रेज्यूमेस का? They'll select your interview, they'll select your application, they'll take your interview, but offer letter they'll give you post result, or offer letter will be conditional. If you pass, then only you will be able to join. Okay, thank you, sir. And please note one point. You pointed a nice thing कि 6 month का वो आप लोग का cooling period हो जाता है. So what happens now if you apply to a big firm, they have a portal जहाँ पे employees refer you या HR refer you. So अगर किसी ने एक बार आपको refer कर दिया है कोई सी भी position के लिए, कोई सी भी location के लिए, so no other person will be able to refer you for 6 months. मतलब 6 महीने तक आप उनका कोई इंटरव्यू नहीं दे पाओगे किसी भी तरीके से। सो प्लीज मेक श्योर अगर आप कोई आपको रेफर कर रहा है तो वो ट्रस्टेड बंदा हो, सही लोकेशन के लिए कर रहा हो, सही डोमेन के लिए कर रहा हो। प्लीज मेक श्योर दैट। Okay. So guys, I'm gonna take only last one question. Others can connect him on LinkedIn. So yeah, Zed, you may ask. हेलो भैया। हेलो, हाय हाय सुशांत। मेरे को पूछना था कि टॉप टायर मतलब मिड टायर की जो टॉप फर्म्स होती है उसमें और बिग फोर में क्या डिफरेंस होता है? सी बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, पॉइंट्स मेंशन करूंगा इसको। बेसिकली द टाइप ऑफ वर्क विच यू गेट, बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है उसमें। क्लाइंट्स बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, वर्कलोड ज्यादा हो जाता है। उसके बाद प्रोफेशनलिज्म, बिग फोर बिग सिक्स हैज अ लॉट ऑफ प्रोफेशनलिज्म, दे फॉलो sequel of discipline as compared to other firms, other small firms or mid-sized firm. उसके अलावा ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, ये मतलब मिड साइज फर्म में इतना ज्यादा नहीं होता है, बट टॉकिंग अबाउट माय फर्म वी सेलिब्रेट ऑल द काइंड ऑफ स्टफ, दे कंडक्ट इवेंट्स, दे कंडक्ट ट्रेनिंग्स, सब कुछ होता है। उसके अलावा डिपेंड्स के कलीग्स कैसे मिल रहे हैं। मिड साइज में अच्छे कलीग्स मिल गए तो अच्छी बात है, लेकिन बिग फोर में यू आर वर्किंग विथ लाइक top notch minds of your industry who are of your age, so you will be learning a lot of things from them. No offense to articles or employees of mid-sized firm, but these are my observations. टॉप टायर फर्म्स मिड टायर फर्म्स कौन कौन होते हैं, मतलब बीडीओ जीटी आरएसएम ना? See, it depends people, there's nothing like big six also, but लोगों ने बना दी है कि big four big six है, फिर बिग 10 भी आ जाता है। डिपेंड्स फ्रॉम सिटी टू सिटी। अगर मैं मुंबई की बात करूं, बिग फोर, देन जीटी, बीडीओ, देन फिर देसाई हरिभक्ति, आरएसएम, केएनएवी, ये चलता ही जाता है। सी, apply your filters accordingly. Firstly apply big four, then big six, then if you are not getting in big six, then top 10 firms, then top 20 firms. Okay, thank you. Yeah, you're most welcome. Okay, guys, due to time constraint, हम यहीं पे stop करते हैं. Thank you, Sashank, for the great insights on it. Thanks, Purva, and thanks, Srishti. Thanks to my student clubs team. I just want to share one insight. Like 1 month ago only, I was on that side of the laptop and hearing Muskan Agarwal and all other great speakers about industrial training. All thanks to my student club who are organizing such a great sessions. And आई थिंक अगर मेरे को ये गाइडेंस उस टाइम मिला होता कि हाउ टू अप्लाई, तो मेरा वो 6 महीना ब्लॉक नहीं होता और मैं शुरू में ही कोई बिग फर्म ज्वाइन कर लेता। बट मेरे को भी वो 6 महीने का कूलिंग पीरियड में डल गया, तो फिर मैं ज्वाइन नहीं कर पाया। ऑल थैंक्स टू यू गाइस एंड कीप दिस अप। यू गाइस आर डूइंग ग्रेट फॉर द इंडस्ट्री। यू विल बी knowing for long, you will be getting known for the long time, as you guys are doing it for free. And also the master class which you guys are offering only for 449 or 499 rupees, whatever it is, it's too affordable, and I think it will be worth it for the students, because I've learned all these stuff on my own, and it took me almost 6-7 months to get into a big firm or my desired firm. And you guys are offering a 10 days workshop for 449 or 499 rupees, which will save their time. And these guys will know how to get into firms, what to prepare for the interview. So
All thanks to you and all the best for the future sessions. Thanks, Purva. Thanks, Srishti. Thank you so much. Over to you, Srishti. Yeah. So अभी शशांक के सेशन के बाद guys I feel कि LinkedIn reference LinkedIn बहुत ज़्यादा buzz हो रहा है. So in our articleship masterclass as it was presented by Padam, we are having a session मतलब module called as LinkedIn masterclass जिसमें we'll be guiding you regarding how to brand yourself on LinkedIn, like how to make references, how to connect with people. So all the other details in our WhatsApp group. So I request you all to join in. So moving on for the session, now we are having the most awaited, that is for the statutory audit. And I would like to welcome my own colleague from BDO, Ayush Agrawal. He is working in statutory audit domain in BDO India LLP. He is also a CFA level 1 clearer. So I welcome you, Ayush, from entire My Student Club team. Hi Shrishti, thanks for the warm welcome. This is a wonderful opportunity for all of these inter students. So what I would like to begin with is that, just when I gave my exams, I faced the same question. I didn't know what to do, and I don't think my student club had any such masterclass back then. So, and one thing that I would like to highlight is that I was not very active on LinkedIn and back then, and so the major challenge that I faced was what to do and how to do. How should I approach these things? So let me share my story what I did. सी हमारे टाइम पे सबको जो हमारे बैच का रहेगा जिसने भी नवंबर 21 में अटेम्प्ट दिया रहेगा उनको यही लगा होगा कि यार टैक्स का पेपर बहुत मुश्किल आया था. तो मेरे दिमाग में तो वैसे ही टैक्स के लिए बहुत डर बैठ गया था एंड देन आई वाज नॉट वेरी कंफर्टेबल विद टैक्स. And when we were preparing for our intermediate exams, I found accounts and FM very interesting. So naturally that domain appealed to me a lot more than taxation. But then I again the same thing, I was not very aware about these niche domains like investment banking, mergers and acquisitions. So what I did was I approached my teacher and I told him that I like these subjects, what should I do? एंड ही जस्ट सेड अभी कुछ नहीं पता है तो ऑडिट कर ले. ऑडिट से बहुत सारे डोर्स ओपन हो जाते हैं पोस्ट क्वालिफिकेशन. यू गेट टू अंडरस्टैंड द इंडस्ट्री फ्रॉम अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव एंड देन आई थॉट मे बी दैट इज व्हाट आई शुड डू. सो यही मेरा सिचुएशन था लास्ट ईयर तक. मतलब जब मैं ज्वाइन करा था कुछ पता ही नहीं था क्या करना है. Then this was one big mistake that I did, but thanks to my student club, I think most people here would get ahead of this challenge and make a wise decision from themselves. And one more thing that I did wrong was that I did not think of relocating. So I am from Pune itself and I am pursuing my articleship in Pune itself. सो जैसे मेजर लोकेशंस हो गए मुंबई, दिल्ली. दिल्ली तो खैर बहुत दूर हो गया यहाँ से, दिल्ली बैंगलोर. अब मुंबई भी एक्चुअली मेरे यहाँ से बहुत पास ही है. But then still I didn't think of relocating to Mumbai, and I think that was one big mistake that I did. And I think all of you should give it a thought because see from a Pune perspective मुंबई यहाँ से बहुत पास है. मेजर जो भी कंपनीज रहती है वो मुंबई में ही रहती हैं और सारे बड़े फर्म्स फॉर एग्जांपल बिग सिक्स अगर हम कंसिडर करें सबका ऑफिस मुंबई में तो है ही. तो मेजर ऑडिट्स मुंबई में चले ही जाते हैं. कुछ कुछ ऑडिट्स जो पुणे बेस्ड हैं, फॉर एग्जांपल लिस्टेड कंपनीज हो गए या बड़े कंपनीज हो गए, उनका नेचुरली पुणे में ही रहता है. बट एक मेजर चंक ऑफ जो क्रीम कंपनीज रहती हैं वो मुंबई में चले जाते हैं. तो लेट मी स्टार्ट बाय सेइंग द मच अवेटेड क्वेश्चन, व्हाई ऑडिट. सो जिनको ऑडिट पहले से ही डिसाइडेड है कि हाँ यार ऑडिट ही करना है उनके लिए तो इट इज अ नो ब्रेनर. बट देन फॉर दोज लाइक मी हु डिडंट नो व्हाट टू डू, I think I'll start it point wise. The first most being that you will apply most of the subjects that you have studied practically. The first and foremost being audit. And then while preparing for CA finals, you only read about what you have done, and that becomes really relatable to you. And for such a theory subject like audit, relatability is a huge factor. Then जैसे मैंने बोला, अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस प्रोसेसेस. देखो इंटरनल ऑडिट में भी वी अंडरस्टैंड एंड कमेंट ऑन द बिजनेस प्रोसेसेस, बट वाइल
in from a statutory audit point of view, you take a broader understanding, and that does help you in understanding businesses. And you also read and go through and understand the internal audit reports. सो एक तीर से दो निशाने हो गए, तुम स्टैट ऑडिट करोगे तो तुम इंटरनल ऑडिट का भी एक फ्लेवर ले ही लेते हो. देन अनदर पॉइंट इज दैट देखो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो भी रहती है उनका एक मेजर यूएसपी रहता है इन्वेंट्री, और वो ही एक मेजर चैलेंजिंग एस्पेक्ट होता है किसी भी ऑडिट में. तो जिन जिन लोगों को आई बिलीव कॉस्टिंग पसंद है, कॉस्टिंग बहुत अपीलिंग लगता है, या फिर जो भी कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटिंग परस्यू कर रहे हैं, आई थिंक उनको इसमें काफी अच्छा एक्सपोजर मिलेगा. एंड जो भी तुमने एक्चुअली अभी तक अप्लाई किया है, अभी तक सीखा है, वो तुम एक्चुअली अप्लाई करोगे. देन सी स्टॉक काउंट्स वगैरह तो सबको पता ही है, तो यू गेट मोर इन्वॉल्व एंड मोर एंगेज्ड विथ अ बिजनेस, एंड देन तुम्हें वो प्रोडक्ट ज्यादा बेटर समझ आते हैं. फॉर एग्जाम्पल तुम किसी भी कंपनी का अगर स्टॉक काउंट करने जाओगे तो यू ऑल्सो अंडरस्टैंड द इन्वेंट्री. देर आर वेरियस इंट्रिकसीज टू एन इन्वेंट्री, बट देन अपार्ट फ्रॉम इन्वेंट्री असेट्स का भी कैसे मेंटेनेंस होता है, एक्चुअली कैसे लोग मेंटेन करते हैं अपने असेट्स, उनको कैसे फिजिकली वेरीफाई करते हैं, उनका रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस किस कंडीशन के बेसिस पे होता है, ये सब आई थिंक एक मेजर फैक्टर है. देन अनदर थिंग इज दैट टैक्सेशन भी काफी हद तक अप्लाई होता है. हर कंपनी को वैसे इनकम टैक्स पे करना होता है, इनकम टैक्स का तुमको कंपटीशन करना पड़ेगा. देन टीडीएस टीसीएस का कैलकुलेशन होता है. एक मेजर जो चीज है वो टैक्स ऑडिट की हो गई. तो एक बार टैक्स ऑडिट कर लिया, आई थिंक देन अ लॉट अबाउट द इनकम टैक्स डोमेन इज कवर्ड. एंड जीएसटी का भी काफी अच्छा एक्सपोजर मिलता है, though it is very limited. I have not seen a lot of exposure given to GST, but then in some cases there might be a lot of exposure. And communication तो हमारा चलता ही रहता है with the client, within the team, with the top level management. तो उसका importance कितना भी हम बोलते हैं, we cannot stress enough on communication. Then सबने सुना होगा एक ऑडिटर को क्वेश्चनिंग माइंड रखना चाहिए, बट देन आई थिंक लाइफ में भी इन जनरल एक क्वेश्चनिंग माइंड और कभी भी लॉजिक एंड रीजंस ढूंढना आई थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट. किसी भी स्टेटमेंट को ब्लाइंडली ट्रस्ट करना कुड बी demeaning to the statement as well, and could be demeaning to ourselves as well. Then as मैंने बोला कि टीम एनवायरनमेंट में वी ऑल्सो वर्क, सो एक्सपेक्टेशंस मैनेज करना एक अलग टास्क होता है कि तुम्हारे सीनियर को फॉर एग्जांपल कोई डिलीवरेबल चाहिए विद इन अ वीक, बट देन यू आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन अनदर एंगेजमेंट जिससे तुम टाइम नहीं निकाल पाओगे, तो तुम्हें वो भी बातें क्लियर रखनी पड़ेंगी अपने सीनियर्स के साथ. सो ये एक मेजर एस्पेक्ट होता है जो कवर हो जाता है. और फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू डू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू लीड एन एंगेजमेंट, you also have to manage your team and their expectations. कुछ कुछ केसेस में कैसे होता है, क्लाइंट हमें आके बोलता है लीडर्स को कि यार तुम्हारा ये बंदा ये नहीं कर रहा, ये अच्छे से रिपीट नहीं कर रहा, एंड देन इसको ये डेटा ऑलरेडी जा चुका है, इसको ये डेटा कितनी बार भेजूं मैं. तो तुम्हें क्लाइंट से भी डील करना है, अपनी टीम से भी डील करना है, और किसी को भी डिसरिस्पेक्ट किए बिना सबसे काम निकलवाना है. आई थिंक दैट इज अ मेजर एस्पेक्ट दैट यू लर्न. एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग आई बिलीव इज दैट ये एक इंडिया के लिए एक स्टार्टअप जनरेशन का एक बिगिनिंग है, एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ द स्टूडेंट्स हियर वुड लाइक टू बिकम एंटरप्रेन्योर्स. सो ऑल दीज स्किल्स, कम्युनिकेशन से लेके, लीडरशिप से लेके, टीम वर्क से लेके, पीपल मैनेजमेंट से लेके, बिजनेस के प्रोसेसेस समझना, क्लाइंट से डील करना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए. So I think that is a major reason why you should give audit a thought, not demeaning any other domain. And yeah, I think audit, मतलब मैं अपना डिसीजन रिग्रेट नहीं करूंगा. फिर एक और मेजर क्वेश्चन जो आता है वो आता है बिग 4, बिग 5, बिग 6 वर्सेस मिड साइज ऑब्लिक स्मॉल साइज. तो अब सिंस आई एम परसुइंग माय आर्टिकलशिप फ्रॉम वीडियो, आई वुड लाइक टू go for a big 4, big 5, big 6. And first point being, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल ऑडिट होता है, इन डेप्थ होता है, थोरो डॉक्यूमेंटेशन होता है, हर एक ऐसे थॉरली फॉलो होता है. कुछ भी ऐसा नहीं होता है कि जो तुम फॉर एग्जाम्पल ओवरलुक कर दो, क्योंकि इतने चेक्स होते हैं तुम ओवरलुक कर ही नहीं पाते हो किसी भी चीज़ को. इतना प्रोसेस ड्रिवन स्ट्रीमलाइन सिस्टम होता है कि तुम मतलब उसी प्रोसेस में बहते रहते हो, एंड एक टाइम बाद वो तुम्हारे अंदर इम्बाइब हो जाता है. तुम जनरली लाइफ को भी इन शॉर्ट इसी अप्रोच से, इसी थॉट प्रोसेस से अप्रोच करने लगते हो.
But and another thing being generally बड़े फर्म्स में अच्छा ऑडिट का सॉफ्टवेयर होता है जो स्मॉल साइज ऑब्लिक मिड साइज फर्म्स में लैक करता है. सो किसी को भी अगर एक अच्छा प्रोसेस ड्रिवन सिस्टम समझना है या फिर किसी भी ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में फ्यूचर में काम करना है, तो आई थिंक दिस बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैलेंज फॉर यू एंड लर्निंग फॉर यू. देन सारे ऐसे तुम अपने आंखों के सामने अप्लाई होते हुए देखोगे. इतने चेकलिस्ट होते हैं हमारे यहाँ पे, आई एम श्योर सृष्टि वुड अग्री विथ मी. एंड इतने चेकलिस्ट होते हैं कि यू कांट जस्ट मिस एनी अदर स्टेप. तुम्हारे पास एक ऐसा रहेगा, उसमें ही इतने प्रोसेस लिखे रहेंगे कि तुम्हें ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, एंड देन यू हैव टू डॉक्यूमेंट ऑल ऑफ दैट. सो आई थिंक एक जनरल लर्निंग के हिसाब से दिस बिकम्स वेरी गुड. देन सबसे बड़ा एग्जाम एडवांटेज जो होता है वो होता है ब्रांड नेम. आई एम श्योर नो वन वुड डिनाई दैट. सबसे इम्पोर्टेंट ये एक रीजन ही है कि बिग 4 बिग 5 बिग 6 ऐसे स्पेसिफिकली अलग से बोला जाता है, ना कि सारे फर्म्स के साथ कंसिडर होता है. पोस्ट क्वालिफिकेशन or even for industrial training, if you have pursued your articleship from a big 6, then a lot of your other counterparts would be left behind you, and then you will have a definite edge over any of those. Or another very great aspect of doing your articleship from a big 6 is that you can move up or down the ladder very comfortably. तुम सपोज एक स्मॉल साइज ऑब्लिक मिड साइज फर्म में हो, वहां से पोस्ट क्वालिफिकेशन यू वांट टू मूव अप द लैडर, से फॉर एग्जांपल बिग 4 और बिग 6, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट समटाइम्स टू गेट इनटू दीज फर्म्स, बिकॉज कभी कभी क्राइटेरिया ही ऐसा होता है कि हमें बिग 6 का ही कैंडिडेट चाहिए. तो ये एक अलग एडवांटेज मिल जाता है. और अगर फॉर एग्जांपल इफ यू जॉइन अ बिग 6 बट देन यू वांट टू मूव इनटू अ बिग स्मॉल साइज और अ मिड साइज फर्म, तो वो तो ऑटोमेटिकली तुम्हें प्रेफर करेंगे, क्योंकि तुम्हारे पास ऑलरेडी एक अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा, अच्छा प्रोफेशनल कल्चर में तुमने काम किया हुआ है, ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि तुमने अच्छे क्लाइंट्स पे काम किया हुआ है. तो इट बिकम्स वेरी इजी रिलेटिवली एज पर माई अंडरस्टैंडिंग. एंड जनरली सारे एससीआई रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हमें आर्टिकल्स को मैटर करते हैं वो थॉरोली फॉलो होते हैं. ऐसा कभी नहीं होता है कि तुम्हें बोल दिया जाए कि नहीं तुम इंडस्ट्रियल नहीं कर सकते, तुम्हें 5 महीने की लीव्स दी है पर तुम 2 ही महीना लोगे, ऐसा कभी नहीं होता है. एंड लीव्स का वही कुछ इशू नहीं होता है. जनरली मेरे केस में अगर मैं बताऊं, तो वी हैव 5 months of study leave plus 15 days each of for attending advanced ITT and GMCS. So that becomes effectively 6 months of leave. And most cases में I'm not very sure about mid-size firms. वहाँ पे एटलीस्ट जो GMCS या एडवांस ITT कोर्सेस होते हैं, उसमें जो भी 15 डेज लीव देते हैं उसमें एटलीस्ट हाफ डे वर्किंग रहता ही रहता है. और अगर हमारा कोर सीजन में लीव नहीं ले रहे हैं हम, तो जनरली लीव पूरा का पूरा मिल जाता है. यू कैन ऑल्सो फोकस ऑन स्टडीज वेरी वेल ड्यूरिंग दैट टाइम. देन वर्किंग आवर्स जनरली ज्यादा होते हैं, बट देन दैट इज द केस एवरीवेयर इन अ compliance field. तो आई डोंट थिंक दैट शुड बी एन इशू. बट देन जब ऑफ सीजन होता है यू ऑल्सो गेट अ लॉट ऑफ टाइम टू स्टडी. और speaking from a mid-size oblique small size firms perspective, I believe from whatever I have experienced so far, mid-size और small size firms में ना बहुत अच्छे personal relationships बनते हैं, क्योंकि बहुत क्लोज एनवायरनमेंट होता है, नियरली सब लोग सबको जानते हैं, एकदम कनेक्टेड फील होता है. बट आई थिंक ये बहुत रॉन्ग क्राइटेरिया होगा मिड साइज ऑब्लिक स्मॉल साइज फॉर्म सिलेक्ट करने का, क्योंकि इवन इफ यू गो फॉर अ बिग 5 और बिग 6, वहां पे भी तुम अपने आप अच्छे रिलेशंस डेवलप कर सकते हो. एंड दीज रिलेशंस आई एम रियली श्योर, मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ये लाइफ लॉन्ग चलते हैं, अच्छे रिलेशन बनते हैं. एंड देन you can count on the persons. That is the most important thing that I have learned. और हर फर्म सपोर्ट करेगी हमें एज आर्टिकल्स. कभी भी ऐसा नहीं होगा कि तुम्हें डिस्करेज किया जाए या तुम्हें कोई स्पेशल ट्रीटमेंट दी जाए इन द नेगेटिव सेंस, तुम्हें कॉर्नर कर दिया जाए. बट फॉर दैट यू शुड ऑल्सो बी एन एक्टिव लर्नर डेडिकेटेड टू योर वर्क, नॉट मेक कंटिन्यूअस एक्सक्यूजेस, बिकॉज फर्म्स को तुमसे आउटपुट भी चाहिए होता है. वो सिर्फ हमें सिखाने के लिए नहीं है, हमें प्रैक्टिकली डिलीवर भी करना होता है. अब और एक क्वेश्चन जो मुझे भी था, ये होता है कि what do we actually do in our audit. So I'll give you a simple example.
First of all, we go on bifurcating the balance sheet and P&L into different areas. For example, let's say property, plant and equipment हो गया, शेयर कैपिटल हो गया, रेवेन्यू हो गया, अदर लाइबिलिटीज हो गए, बोरोइंग्स हो गए, ये सब पे हम इंडिविजुअली अलग अलग से वर्क करते हैं. सो एक प्रैक्टिकली अगर एग्जांपल दूं तो आई थिंक सिंपली एकदम सिंपल एग्जांपल रहेगा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का, जो अपने असेट्स होते हैं. तो देर आर टू अप्रोचेस टू एन ऑडिट, जो आप सब अभी अभी रिसेंटली पढ़ के आए, मुझे मतलब रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है. जो भी अपन फर्स्ट होता है कंट्रोल टेस्टिंग, जिसको हम टीओसी बोलते हैं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स. तो अब एंटिटीज क्या करते हैं, वो अपने प्रोसेस से स्ट्रीमलाइन करने के लिए एक कंट्रोल्स एस्टेब्लिश करते हैं. एक सिंपल एग्जांपल बताऊं तो कोई अगर नया एसेट परचेज करना है, तो जिस डिपार्टमेंट को नीड फील हुई होगी कि मुझे एसेट चाहिए, मुझे नया एसेट की जरूरत है, जो पुराना एसेट है वह वेयर आउट हो गया है, तो सिंपली वो एक रिक्वेजिशन रेज करेंगे, वो रिक्वेजिशन अप्रूव होगा. तो वो रिक्वेजिशन बनने के बाद ही जो भी परचेज ऑर्डर है आफ्टर नेसेसरी अप्रूवल्स वो प्लेस होगा. उसके बाद ही जो एसेट है वो डिलीवर होगा. उसके बाद ही जो इनवॉइस आएगा वो बुक होगा. इस हिसाब से लेट्स टेक एन एग्जांपल, जो पीओ का रेट है वही इनवॉइस में भी बुक हुआ है क्या, ये एक इंश्योर होता है. और जो क्वांटिटी गेट इनवर्ड में फॉर एग्जांपल इनवर्ड हुई है, वो ही इनवॉइस में लिखी है क्या, ये एक मैच हो गया. तो इस एंगल से हमारा परचेज ऑर्डर, इनवॉइस एंड जीआरएन तीनों मैच रहता है. दिस इज व्हाट वी कॉल अ थ्री वे मैच. एक सबसे सिंपल कंट्रोल है. तो एज ऑडिटर हमारा फोकस क्या रहेगा, ये कंट्रोल पूरे साल में इफेक्टिवली ऑपरेट हुआ है क्या और एफिशिएंट है क्या. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल कुछ सैंपल्स ले लिए, उनमें यही टेस्ट हम प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखते हैं कि ये सब मैच हो रहा है क्या. एंड देन इफ दैट इज द केस, देन द कंट्रोल हैज बीन ऑपरेटिंग इफेक्टिवली, दैट इज व्हाट वी कंक्लूड. एंड सर्टेन केसेस में क्या होता है, ये सारे कंट्रोल्स ऑटोमेटेड होते हैं, सिस्टम में ही तुम एंट्री कर दो, सब कुछ ऑटोमेट रहता है. एंड फॉर दैट, at least at BDO, we have a separate IT team which runs their controls and runs their programs that we commerce students don't understand, and उस हिसाब से वो हमें assurance provide करते हैं. तो ये एक एस्पेक्ट हो गया ऑडिट का, जो टीओसी हो गया. अब हमें और अश्योरेंस जो आता है वो डिटेल टेस्टिंग ऑब्लिक सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स अप्लाई करके आता है. फॉर एग्जांपल, अब ये पीपी एरिया में रिस्क क्या होता है कि जो तुमने नया असेट ऐड किया, उसका जो लाइफ है वो फॉर एग्जांपल कंपनीज एक्ट के हिसाब से नहीं है. एंड इफ लाइफ इज इटसेल्फ इज नॉट एज पर कंपनीज एक्ट, तो तुम्हारा डेप्रिसिएशन हिल जाएगा. डेप्रिसिएशन हिल गया तो तुम्हारा वो टोटल एक्सपेंस हिल जाएगा, पीबीटी हिल जाएगा, ईपीएस हिल जाएगा. इन शॉर्ट बहुत सारे जगह पे इफेक्ट आ जाता है. तो हम यूजफुल लाइफ टेस्ट करते हैं. देन एक और सिंपल एग्जांपल होगा कि डेप्रिसिएशन हम रिकैलकुलेट करके देखते हैं. एटलीस्ट जो भी एसेट क्लास है, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर्स है, उसमें कितना डेप्रिसिएशन होना चाहिए एज पर पॉलिसी, या फिर कितना ही लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, उस हिसाब से अप्लाई हुआ है क्या. एसएलएम डब्ल्यूडीबी जो भी मेथड है वो अप्लाई हुआ है क्या. तो ये एक तरीका हो गया पीपीई एज अ होल पे अश्योरेंस लाने का. ऐसे ही अदर अदर प्रोसीजर्स होते हैं जो हम हर फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैप्शन पे लगाते हैं, एंड देन उससे हमें अश्योरेंस आता है. अब ये एक छोटा एस्पेक्ट हो गया जो कि है सिर्फ एग्जीक्यूशन का. इसके पहले बहुत सारा काम जाता है प्लानिंग में, और बहुत सारा काम जाता है कंक्लूजन में. उसके बाद ही रिपोर्ट रेडी होता है, और उसके बाद ही ऑडिट रिपोर्ट इशू होता है. देन एक और क्वेश्चन जो मुझे लोग जनरली लिंक्डइन पे पूछते हैं, व्हाई बीडीओ. तो मैं अपने एग्जांपल से बता सकता हूँ कि बाय द सेकेंड ईयर यू वुड गेट टू एग्जीक्यूट मोस्ट ऑफ द एरियाज ऑन योर ओन. एंड जनरली कैसा होता है किसी भी बिग फोर ऑब्लिक बिग सिक्स में, तो लिस्टेड क्लाइंट्स मिल जाते हैं, एंड जो लिस्टेड मिलते हैं उसमें ही तुम चारों क्वार्टर वही एंटिटी में एंगेज रहते हो. तुम्हें एक सेट एरिया मिल जाता है, यू गेट टू डू ओनली दैट एरिया. स्लोली एंड ग्रेजुअली यू बिकम एन एक्सपर्ट इन दैट एरिया, एंड फॉर दैट रीजन डेडलाइंस भी वैसे भी स्ट्रिक्ट होते हैं, तुम वही एरिया करते रहते हो. नॉट, आई मीन आई एम सेइंग दिस इन अ जनरल वे. कुछ कुछ केसेस में मिलते होंगे अलग अलग एरियाज भी, बट जनरली यही मैंने देखा है. एंड एट वीडियो ऑल्सो, इवन इफ यू गेट अ लिस्टेड एंटिटी, तुम अपने मैनेजर सीनियर से बात करके जरूर प्रैक्टिकली अलग अलग एरियाज एग्जीक्यूट करने का चांस मांग सकते हो. एंड डेफिनेटली सारे सीनियर्स बहुत कंफर्टेबल होते हैं और बहुत ही ज़्यादा इनकरेजिंग होते हैं तुम्हारे ये स्टेप्स के लिए. एंड एक और एस्पेक्ट जो है वो ये है कि
हम सबको जनरली सेकेंड ईयर तक इंडिविजुअली ऑडिट लीड करने का मौका मिल जाता है। तो आई थिंक फ्रॉम अ सीवी पर्सपेक्टिव वो काफी इम्पैक्टफुल रहता है पोस्ट क्वालिफिकेशन। तुम अगर लिख दो कि मैंने बाय द सेकेंड ईयर इटसेल्फ आई हैव लेड एन ऑडिट एंगेजमेंट ऑफ सो एंड सो इंडस्ट्री, इतने लोग थे मेरी टीम में, मैंने डायरेक्टर पार्टनर सबको रिपोर्ट किया, then I think that becomes a very good USP for you and that can set you apart from others. And I think Shashank also said this, अच्छे इवेंट्स होते रहते हैं वीडियो में, सबका टीम एनवायरनमेंट अच्छा रहता है, टीम बॉन्डिंग सेशंस काफी रेगुलर होते हैं, एंड फ्रॉम अ मोर टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू रेगुलर ट्रेनिंग्स आर हेल्ड, एंड कुछ भी नया अपडेट आता है तो कॉन्स्टेंटली ट्रेनिंग्स होती है, रिफ्रेशर ट्रेनिंग्स होती रहती है। एंड अगर हम एज आर्टिकल सोचें तो ये सारी जो रिफ्रेशर ट्रेनिंग्स होती है ना, ये सारी हमारे पढ़ाई के लिए बहुत इम्पैक्टफुल होती है। कभी कभी कैसा होता है हम वही इंडेक्स पढ़ रहे हैं जिसका हमें ट्रेनिंग मिल रहा है, तो सुबह तुम लेक्चर करके जाओ, तुम वही इंडेक्स पढ़ रहे हो, तुम फर्स्ट ऑफ ऑल तुम आंसर देख के सबका अटेंशन भी ग्रैब कर सकते हो, एंड देन तुम्हारे लिए साइड बाय साइड ऑफिस आवर्स में रिवीजन भी हो रहा है। तो आई थिंक दैट इज अ वेरी गुड एस्पेक्ट। और एक और अपॉर्चुनिटी जो मिलता है वो है डायरेक्टली पार्टनर से डील करने का। मोस्ट बिग फोर्स में डायरेक्टली पार्टनर से डील करने का मौका बहुत रेयरली मिलता है एज फार एज माई नॉलेज गोज, एंड यहाँ पे इफ यू गेट टू interact with the partners that becomes a very good point for you and the partner also has a lot of confidence in you. साथ ही साथ मल्टीपल इंडस्ट्रीज में भी काम करने का मौका मिलता है, सो आई थिंक दैट इज रियली बेनिफिशियल। सो अब मैं ज्यादा खींचूंगा नहीं, जो भी Q&A है, लेट्स बिगिन विद द Q&A राउंड एंड लेट्स आंसर योर क्वेश्चंस। Okay, thank you so much, Ayush, for guiding everyone regarding the start audit and regarding the video also. So, taking forward the first question of Vanshika. Vanshika, you may ask. Yes. Actually, I want to ask that if I did my articleship from a local town in a mid-sized firm, so how can I improve my resume for future by being in a mid-sized firm only, so that I See, I could think go in a big four in the future for job? See, I think you should focus on learning a lot in the first year. Try करना कि तुम जितना मैक्सिमम सीख सकते हो फर्स्ट ईयर में सीख जाओ, A to Z। तुम खुद से एक्टिव लर्नर बन के यू शुड आस्क योर सीनियर्स फॉर मोर वर्क, मोर एरिया, सो दैट तुम्हें हर एरिया का एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग मिले। ट्राई टू अटेंड पार्टनर रिव्यूज, आई थिंक उससे भी तुम्हारी काफी मिस्टेक्स कम होंगी एंड देन यू विल गेट टू लर्न अ लॉट। And once that is done, you can approach your seniors to lead clients individually. I think that would be a major factor that can set you apart from others. Okay, and are there any internships or other courses which we should do to improve our CV for now? For now you can focus on Excel, I would say. जितना ज़्यादा प्रोफिशिएंसी एक्सेल में रहेगा उतना ज़्यादा तुम्हारा ऑडिट में एफिशिएंसी बढ़ेगा। तो एक्सेल पे यू कैन गो ऑन एनी कोर्सेरा, यूडेमी, वहाँ से कुछ भी अच्छा तुम कोर्स कर सकते हो। And tally पे if you have a good hand, I think that can also be a good edge for you. Other than that, audit masterclass तो होते ही हैं, then you can also go ahead and do that. Okay, thank you. Yeah, most welcome. Okay, Nitish, you may ask your question. तो अभी मेरा रेगुलर, मेरे पास फ्री टाइम होगा 3 से 4 महीने का मई तक, एंड मैं उसके बाद ही अप्लाई कर पाऊंगा। तो ये जो 3-4 महीने का पीरियड है उसमें मेरे को कहीं इंटर्नशिप करनी चाहिए या एक्सेल, टैली और इन सब स्किल्स पे काम करना चाहिए? See, I think 3-4 months is a huge time. You can definitely work on Excel, जो भी मैंने वंशिका को एक्चुअली प्रीवियस आंसर में बताया वो सब कुछ कर सकते हो। बट देन you can also try to go, अब कोई भी लोकल सी होगा ना, उसको बस बोलना कि मुझे आपके साथ काम सीखना है। आई थिंक दैट कुड बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। तुम अपने सीवी में भी वो ऐड कर सकते हो, इवन इफ वो आर्टिकलशिप का पार्ट नहीं हुआ, कुछ पे नहीं मिला। आई थिंक फ्रॉम अ लर्निंग पर्सपेक्टिव दैट कैन रियली सेट यू अपार्ट फ्रॉम द अदर्स। छोटे छोटे इंट्रिकसीज हो गए काम के, बीट एनीथिंग, कोई भी डोमेन जो तुम्हें पसंद है,
और अगर मतलब वो डोमेन नहीं भी मिल रहा है तो इन जनरल भी अगर कुछ भी सीखने को मिले तो आई थिंक यू शुड ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी। ओके आयुष, अभी मेरे को एक कॉल आया हुआ है एक फर्म से, मैंने अभी इंटरव्यू दिया था, सो शुड आई ज्वाइन? बट देन यू सेड दैट मई से ही आर्टिकलशिप ज्वाइन कर पाओगे ना? हाँ, वो आर्टिकलशिप आई मीन इंटर्नशिप के लिए कि आप कर सकते हो 3-4 महीने के लिए। Okay. Then if that field is interests you, I think there are no issues. You should definitely join. This would only add value to you. ओके आयुष, थैंक यू। Yes. Okay, Anshika, you can ask. Hello. My question is, what kind of questions are asked for statutory audit in interviews? Okay, so generally what I have seen is that see, for example, the manager who's taking your interview has an audit of a specific industry. तो तुम्हें उस इंडस्ट्री का कुछ तो भी पूछ सकते हैं। They would also know that they should not expect much from you. एकदम basic questions रहेंगे इंडस्ट्री के regarding, so you should try to keep yourself updated on various common business industries and एक अपना favorite इंडिया AS and स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग ऐसे ये एक तैयार रखो, क्योंकि बहुत जगह पे पूछते हैं तुम्हारा फेवरेट एएस क्या है, तुम्हारा फेवरेट ऐसे क्या है, उसी के ऊपर क्वेश्चंस पूछते हैं। और एक और टिप इसमें ऐसा है कि सच में फेवरेट की तरफ मत जाना, और अगर तुम अपने फेवरेट के लिए सच में बहुत अच्छे थरो हो, एकदम कॉन्फिडेंट हो, देन जाना। और जो भी कोई सिंपल एएस या ऐसे रहेगा वो बोल देना, ज्यादा क्वेश्चंस भी नहीं पूछ पाओगे मतलब वो लोग भी, एंड देन यू विल बी वेरी क्लियर ऑन व्हाट टू आंसर। So another question that is very commonly asked is that AS9 revenue recognition वो काफी important बन जाता है स्टैट ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड इन सर्टन केसेस बेसिक अकाउंटिंग एंट्रीज पूछ लेते हैं कि एक एग्जांपल देके, तो वो तो आई थिंक मोस्ट ऑफ अस वुड गेट थ्रू, एंड मोस्टली सीवी रिलेटेड ही रहता है जो भी तुम सीवी पे लिखो। एंड इफ यू मेंशन दैट यू आर प्रोफिशिएंट इन एक्सेल, यू हैव वर्कड ऑन सम एक्सेल वर्किंग्स, देन पूछ सकते हैं कि तुमने क्या काम किया, क्या फॉर्मूलाज यूज किए, कितना एडवांस्ड एक्सेल आता है। बेसिक ही रहता है, ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रहते हैं, सो नॉट टू वरी अ लॉट। Thank you. Okay, we'll take a few more. Atharva, you may ask. Hi Ayush, how much likely is it for the Big Four or the Big Six to take a transfer case? See, generally, if the case is within an year, तो मेरे केस में कैसा है, अभी अभी रिसेंटली 2 years वाला स्क्रीन आया है ना, तो सॉरी स्कीम आया ना, तो वो उस केस में आई एम नॉट रियली श्योर, बट देन 3 to 6 months शुड डेफिनेटली डू। और आई थिंक हमारे केस में जब 3 years का आर्टिकलशिप है, आई थिंक 1 year तक दे जनरली एक्सेप्ट, बट देन कुछ कुछ केसेस में लोकेशंस का भी फर्क पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, a big six from a different location may not accept the transfer cases, but a big six from another location may accept. So थोड़ा location पे भी specific रहता है। So should I like straight up mention it on my CV that I have like I'm transfer Yeah, case, I or what think should it I is do? better to be very clear. You should definitely be very clear with them, and बाद में ये सब चीजों से problem होने से अच्छा है you straight up specify जो भी case है। I think Yeah, that is better. thank you. Yes. Okay, Harsh, you can ask your question. हेलो आयुष, अभी मैं Hi, थोड़ा Harsh. कंफ्यूज हो रहा हूँ कि मेरे लिए कौन सी आर्टिकलशिप के लिए डोमेन सही रहेंगी, उसके लिए थोड़ा गाइडेंस Okay. मिलेगा क्या? मतलब कौन से पैरामीटर्स पे मैं डिसाइड कर पाऊंगा? ओके, सी मेरा जैसे केस था, मेरा मतलब इवन आई वाज नॉट श्योर कि क्या करना चाहिए, बट देन आई वाज श्योर कि मुझे टैक्स नहीं करना है, तो वो स्पेसिफिकली डिडक्ट हो गया था मेरे चॉइस से। एंड आई थिंक ऑडिट एक अच्छा तरीका हो सकता है, जैसे मैंने शुरू में बताया, ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग लेने का, या फिर अलग अलग डोमेन्स में पोस्ट क्वालिफिकेशन अप्लाई करने का। आई थिंक ऑडिट कैन बी अ कंफर्टेबल रूट, but then if you are coming down to another specific field, then you can definitely go ahead with that. ओके, मेरा और एक क्वेश्चन था। मैं अभी मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स पे उतना कॉन्फिडेंस नहीं हो, तो टॉप फर्म्स में मैं अप्लाई तो करना चाहता हूँ, लेकिन मेरा वो फैक्टर ज्यादा मतलब सिलेक्शन चांसेस कम करेंगे क्या कम्युनिकेशन स्किल्स का?
just be confident. Language these days isn't a barrier. You can definitely communicate in Hindi, English, कुछ भी बोल सकते हैं. कुछ ऐसा barrier नहीं रहता है. Just be confident and be polite, and I think that should do. Okay, thank you. Yes. Okay, Saisha, you may ask your question. Saisha, are you there? Otherwise, Vivek, you may ask. Yes, yes. Good Okay, evening. okay, you may ask. So I want to know कि अगर हम Hello, am I audible? Yes, yes. So if I want to apply for a mid-sized firm, तो उसके अंदर हमें हर डोमेन के अंदर एक्सपीरियंस मिलेगा. ये एक्चुअली फर्म टू फर्म डिपेंड करता है. कुछ कुछ मिड साइज फर्म्स में भी डिपार्टमेंटलाइजेशन रहता है, तो तुम स्पेसिफिक एक ही डिपार्टमेंट में काम करते हो, ऐसा भी होता है. एंड देन कुछ फर्म्स में हर डोमेन का लर्निंग करने को मौका मिलता है. सो आई थिंक थोड़ा केस टू केस डिपेंड करेगा. और एक और एस्पेक्ट जो मैं एक्चुअली भूल गया था बताना, कि वीडियो में स्पेसिफिकली यू डू हैव एन ऑप्शन टू स्विच योर डोमेन इन केस द डोमेन you are working in doesn't suit you, but then that is definitely after the approvals and the necessary regulations need to be followed. So I think 3 to 4 months का period रहता है जिसमें तुम you can switch over, so you can definitely give it a thought. ओके, अगर फर्म ऐसी है कि जो हमें हर एक डोमेन में एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगी, तो उसके अंदर वो फर्म हमें बस मतलब थोड़ा थोड़ा सा एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती है, या फिर फ्रॉम द वेरी बेसिक वो हमें अंडरस्टैंडिंग करवाती है उस डोमेन में. सी अपना टाइम तो एक्चुअली अब से तो 2 साल ही है, तो 2 साल में हर चीज इन डेप्थ प्रॉपरली 100% सीखना इज वेरी डिफिकल्ट. तो जितना मैंने सुना है, you do get to experience a lot of these areas, but then specialization in short नहीं हो पाता है. तो in case you are looking to start your own practice, I think definitely small size mid size is the way to go. But then if you want to work in a specialized corporate world, then definitely specialization is preferred. Okay, thank you so much. Okay, we'll take last 2 questions. Yashwant, you may ask. Hi, Ayush. Hi. I am pursuing my articleship from mid-size firm. I want to ask you a question that at present most of the articles are going for industrial training. So what are your views? I should go for industrial training or not? Matlab, what are the benefits of going for industrial training, or continuing articleship is beneficial? And are you also going for industrial training or not? See, ये बहुत ही subjective choice है, I think. देखो, अगर if you have an area that you want to work in, then definitely industrial should be preferred. And देखो, लीव्स वगैरह का, वर्किंग कल्चर का, ये सब तो एस्पेक्ट डिफरेंट है ही, वो तुम्हें खुद से ही अपने चॉइसेस के हिसाब से इवैल्यूएट करना पड़ेगा. बट देन अब से जो 2 साल का केस है, आई थिंक इंडस्ट्रियल बहुत प्रेफर्ड ऑप्शन रहना चाहिए लोगों का, क्योंकि इंडस्ट्रियल में अब तक कैसा होता था, 3 महीने 4 महीने छुट्टी मिलता है. बट देन न्यू स्कीम में शॉर्ट 6 महीना छुट्टी तो मिल ही रहा है किसी भी हालत में. तो इंडस्ट्रियल एक अच्छा ऑप्शन बन जाता है. एंड आई हैव हर्ड दैट post qualification, if you have been part of an industrial training, it also adds a lot of value to your CV. So definitely I think it is not a very bad option. और since ICI खुद भी एक option recommend कर रहा है, तो अच्छा ही होगा. Okay, thank you. Okay guys, so sorry, depending upon the time constraint, we'd like मतलब हमें ये start order का session यही end करना पड़ेगा. So thank you so much Ayush, and they all will be very happy if you answer to their queries via LinkedIn. Yes, sure, definitely. And I'd like to thank my student club for this opportunity, and Srishti and Puva, you have been great hosts. And like Sashank said, I was also on the other side few months back, and it does feel great to be on the other side now. So looking forward to more sessions. Keep doing this great work. I think a lot of value is added over these sessions.
जो सब चीजें हमने मिस आउट की हैं वो ये लोग मिस आउट नहीं कर रहे हैं. I think this is a great initiative. I'd like to stay connected with all of you. Thank you so much, Ayush, for sparing your time and coming here, spending this evening with us. Thank you so much. Yes, most welcome. Thank you. Thank you. Okay, guys. So now moving forward to our next speaker, we are having here Abhishek Bang. He is pursuing his articleship from BDO India LLP into investment banking domain. Abhishek, are you there? Yes, I'm there. Is my Yeah, audio yeah. video clear? Okay. Yeah, it's clear. Yeah, works. Okay, so Abhishek is also a very active member and MCM in Mumbai WRC. And welcome, Abhishek. Like hosting you for second time. It's very happy to see you here. Good. Yeah, thank you. Even Srishti was there in national conference. She won Best Paper Presenter Award. Thank you, thank you. Okay, so without wasting any of our time, Abhishek, we'll directly jump on to the questions. Firstly, I would like to ask you, like, what exactly does the articleship in investment banking looks like, and what practical work do we need to there? Okay, first of all, I'll clear the doubt. What is investment banking? Because I remember जब मैं interview देने जा रहा था, the very first question was asked was what is investment banking? और बाद में जब when I got selected, when I asked my manager, तो लोगों ने ऐसे ऐसे जवाब दिए थे कि that we directly invest in companies, हम कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, we are a bank like thing. ऐसा कुछ भी नहीं है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में. If I say in proper Hindi language, investment banking is nothing like you are a dalla, you are a broker. You are a broker of a transaction. So there is a company A and there is an investor. So A कंपनी को अगर पैसा उठाना है या तो उनको फंड रेस करना है या तो स्टेक डाइल्यूट करना है, तो उसके लिए दे नीड मनी. पैसा कौन डालेगा? इन्वेस्टर डालेगा. इन्वेस्टर और कंपनी के बीच में जो मीडिएटर होता है, दैट इज इन्वेस्टमेंट बैंकर, नथिंग एल्स, एज सिंपल एज दैट. So this is what investment banking is. And coming to the question, what does it look like? I think I am the right person to answer because पहले मैं stat audit में था. For the first 6 to 7 months, I was in stat audit in GT. Then I took a transfer in video investment banking. So both are poles apart, literally poles apart. Where one is a regulatory thing, stat audit, and then this is a finance thing. इसकी खूबसूरती यह है कि देयर इज नो राइट और रॉन्ग इन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग. तुम जो काम कर रहे हो, दैट इज योर इंटरप्रिटेशन ऑफ योर डेटा. यहाँ पे कुछ सही कुछ गलत नहीं है. ऑडिट में क्या है कि देयर आर स्पेसिफिक प्रोसीजर्स विच आर फॉलोड, उसके ऊपर आंसर आता है एंड देन यू हैव टू सी मटेरियल है नहीं है हम स्क्रूटिनी करेंगे नहीं करेंगे, ऐसा प्रॉपर अप्रोच फॉलो होता है. इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में देयर इज नो राइट आंसर. तुम जो वर्किंग कर रहे हो, यू शुड बी एबल टू से कि तुम्हारा रैशनल क्या है. So it is a lot of subjective work. इसके लिए applied thinking ज़्यादा लगता है. So this is like what investment banking is and what articleship is in it. Okay, so can you explain your work taking an example? Okay, so I'll walk you through a deal. Of course, I won't be taking the client's name. Confidentiality is a thing. Uh, so investment banking में दो तरीके के deals होते हैं. There is a buy side deal and then there is a sell side deal. Buy side deal क्या होता है? जहां पे कंपनी खुद का स्टेक बेच रही है. सो वी आर फ्रॉम कंपनी साइड कि हम कंपनी को हेल्प करेंगे उनका स्टेक बेचने के लिए. एंड देन देयर इज अ दिस वाज सेल साइड, सॉरी दिस वाज सेल साइड कि जहां पे हम कंपनी को हेल्प कर रहे हैं उनका स्टेक बेचने के लिए. एंड बाय साइड वहां पे है वेयर इफ एन इन्वेस्टर वांट्स टू पुट अ मनी इनटू अ कंपनी और एक दूसरी कंपनी को स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट करना है ये कंपनी में, तो वहां पे हम वो कंपनी को हेल्प कर रहे हैं. तो दैट इज बाय साइड. Like we are helping in buying a company. Whether sell side में we are helping in selling a stake of the company. Buy side or sell side. So I was working in sell side. जहाँ पे एक कंपनी थी XYZ कंपनी. They wanted to raise funds. So it was a family owned business. They were raising funds for the very first time. So our team was helping them throughout. We brought in investors. So deal functions through like this. So सबसे पहले एक teaser बनता है. तो उसके अंदर वी नो कंपनी. अब हम कंपनी के साइड से है, लेट्स इमेजिन हम कंपनी के साइड से है, तो वी नो अबाउट कंपनी. हमको कंपनी के फाइनेंशियल्स, एवरी स्क्रूटिनी लाइन आइटम हमको एक एक करके सब पता है. व्हाट वी विल डू, हम एक टीजर बनाएंगे. टीजर में क्या होता है, देयर इज नो कंपनी नेम, नथिंग. यू बस एक ऐसी है कि देयर इज एक्सवाईजेड कंपनी, ऐसी ऐसी है, आर यू विलिंग टू पुट इन मनी और नॉट.
बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग होता है जहाँ पे तुम कंपनी का नेम डिस्क्लोज नहीं कर रहे हो, बट एट द सेम टाइम तुम इन्वेस्टर्स को अप्रोच कर रहे हो कि आर यू इन्वेस्टेड इन दिस कंपनी XYZ जिसकी ये फीचर्स है। इफ यस देन वी विल साइन अ डीडी, अ मैंडेट, जहाँ पे हम मैंडेट साइन करते हैं कि अब हमने उनको टीजर दे दिया, देन दे आर ऑन द टेबल, मेमोरेंडम साइन होता है एंड वी प्रेजेंट द कंपनी कि ऐसा ऐसा है, देन देयर इज अ मैंडेट विच इज साइंड कि इफ XYZ थिंग्स आर राइट देन वी आर विलिंग टू पुट इन मनी, इफ रेवेन्यू इज दिस, इफ एबिटा इज दिस, we'll do our scrutiny, इन्वेस्टर खुद की स्क्रूटिनी करेगा, if this is right we are ready to put in the money। और बाद में डीडी होता है, डीडी के टाइम इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की जो टीम होती है वो पीछे हट जाती है। डीडी इज लाइक एन एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ ऑडिट, जो इन्वेस्टर कराता है कंपनी का कि जो तुमने रेवेन्यू बताया वो सही है क्या, जो तुमने एबिटा बताया वो सही है क्या। इफ एवरीथिंग गोज वेल देन आखिरी में नेगोशिएशन टेबल पे वैल्यूएशन पे डिस्कशन होता है कि यस कंपनी भी रेडी है सेल करने को, इन्वेस्टर भी रेडी है बाय करने को, बट एट व्हाट वैल्यूएशन। दिस इज हाउ द डील फंक्शंस। Okay, quite interesting it looks. So, like इतना सारा काम and everything, analysis and all. So, how's the work pressure? मतलब studies, work pressure, सब हो पाएगा कि manage if they do articleship in this domain? अब वो करने वाले पे है। लाइक आई वाज मैनेजिंग माय विकासा थिंग एज वेल। ऑफ कोर्स थोड़े से फ्रिक्शन तो आया ऑफिस में, काम में फ्रिक्शन आया, थोड़ी डांट भी सुनने पड़ी, बट एवरीथिंग इज वर्थ इट एट द एंड। तो आई थिंक वर्क प्रेशर मैनेज तो होना चाहिए, बट ऑडिट में कैसा होता है कि क्वार्टर खत्म हो रहा है, LR आने वाला है, ईयर एंड हो रहा है, ये आने वाला है, सो पीरियोडिकल काम है। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में डील के ऊपर काम आता है, डील शुरू हुई तो यू डोंट नो व्हेन इट विल एंड, तो देयर आर हेक्टिक डेज एंड देयर आर वेरी लेस वर्क डेज एज वेल, so depends। Okay, great. So, like how they all should prepare for the interviews and क्या questions पूछते हैं basically? So I was coming from a stat audit background पहले तो। अभी सारे आई गेस जस्ट अभी इंटर दिया होगा और रिजल्ट के लिए वेट कर रहे होगे, ऐसा ऑडियंस होगा। सो आई से फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, सबसे पहले यू नीड टू लव FM। लव FM का मतलब ये नहीं कि तुमको सब समझ में सब तुमको पता है नहीं, तुमको समझ में आ रहा है क्या, वो जो तुम्हारा गट इंस्टिंक्ट है वो चल रहा है क्या, तुम्हारा इंस्टिंक्ट तुम देख रहे हो। तो CAPM में बस फॉर्मूला नहीं, तुमको अंदर इन डेप्थ समझ में आ रहा है क्या कि क्या है वो CAPM। अगर ये है तो देन यू आर अ राइट फिट। व्हाट आई डिड वाज देयर इज अ प्लेलिस्ट ऑफ अश्वथ दामोदरन सर ऑन यूट्यूब। तो वो एक वैल्यूएशन के ऊपर एक प्लेलिस्ट रन करते हैं। इट इज नथिंग बट उन्होंने वैल्यूएशन के टेक्निक्स बताया अलग अलग, जैसे DCF हो गया, मल्टीपल वैल्यूएशंस हो गए, बाद में एसेट वैल्यूएशन हो गया, ऐसे अलग अलग टाइप के वैल्यूएशन उन्होंने ब्रेक डाउन किया है एक प्लेलिस्ट में। सो दैट रियली वर्कड फॉर मी। मैं वहां पे वही बता रहा था, व्हेन दे आस्क्ड मी CAPM क्या है, तो CAPM छोड़ के भी मैंने और 10 चीजें बता दी थी उनको, सो दे वर क्वाइट इम्प्रेस्ड ऐसा। Okay, so some of the other important points that you may like to add or share to the students. I would say the two subjects which would help you in preparing for an interview would be accounts and FM। अगर ये दोनों आपके बहुत क्लियर है तो इट शुड गो स्मूथली। FM का जो भी CAPM वाला पार्ट हो गया, या तो फिर कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाला पार्ट हो गया, ऑल दोज आर रेलेवेंट। न्यूज़पेपर पढ़ते जाओ, जो न्यूज़ आ रही है वो पढ़ते जाओ, यू मस्ट बी रेलेवेंट। IB में वो ये है कि यू मस्ट बी रेलेवेंट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, कि तुमको पता है कि अभी फंडिंग विंटर क्यों चल रहा है, अभी कंपनी ज्यादा पैसा डालने में क्यों इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि अभी बॉन्ड यील्ड्स हाई पे है US के, तो पैसा वहां पे ज्यादा जा रहा है, इसलिए मार्केट में नहीं आ rहा है। तो यू शुड बी अवेयर ऑफ ऑल दोस थिंग्स। तो रिलेवेंस रहना चाहिए एंड दैट्स व्हाई न्यूज़पेपर इज आल्सो अ थिंग। Okay, great. Abhishek, it was great hearing from you. So now I would like to open this platform to the audience so that they may ask the questions. So Kshitij, you may ask. No, sorry. Vanshika, you can ask your question. Hello, Abhishek. Hello, Vanshika. Actually, I want to ask that you took transfer from GT to BDO. So, are there any difficulties to take transfer, or what are the procedure to take transfer, that I want to know? अब मेरे टाइम में क्या था कि 3 साल का आर्टिकलशिप था, सो यू कुड टेक ट्रांसफर इन 6 मंथ्स, बट अभी आपके टाइम में 2 साल का ही ये है आर्टिकलशिप। सो व्हाट यू कैन डू कि अगर इन केस इफ यू डोंट गेट वैल्यूएशन और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इन फर्स्ट
फर्स्ट ऑफ योर आर्टिकलशिप, बाद में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग है। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में तो और बहुत सारे ऑप्शंस है फॉर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, सो यू कैन डू दैट। ट्रांसफर का अभी नए वाले स्कीम में थोड़ा इशू आ सकता है फील, बट ओल्ड वाले स्कीम में तो इतना नहीं आता था। एटलीस्ट इन मुंबई देयर वर फर्म्स विलिंग टू टेक स्टूडेंट्स हु आर 6 months, 9 months, 12 months ट्रांसफर केस एज वेल। Okay, thank you. Okay, Ravi, you can ask your question. Ravi, your background voice is very much. Yes, you may ask. Well, hello Abhishek. Am I audible? Yeah, you are audible. All I wanted to ask you, bro, अपना interview mode, which mode we should choose? यानी we should go by digital way or we should walk in the company and directly give the interview? That depends. My in my case it was a walk-in interview, क्योंकि वीडियो walk-in interview ले रहा था मेरे टाइम पे। बट अदर देन दैट मोस्टली द इंडस्ट्री प्रैक्टिस की डिजिटल इंटरव्यू होता है, वर्चुअल इंटरव्यू होता है। Yes. Thank you, bro. That's it. Atharva? Hello. Yes, Atharva, you may ask. Hello. Hello. Hi, Yes, Atharva. yes, hi. Actually, as you move from stat audit to IB, so at money matters a lot. So apart from that, I like accounts or FM. Do you think that IB offers more lucrative growth in terms of career? यार आर्टिकलशिप में तो सब सरी के पैसे देते हैं। अब दैट डिपेंड्स ऑन यू कि तुमको क्या करना है। आई डिड ऑडिट फॉर 6 months, उसमें मेरे को इतना पसंद नहीं आया था। तो अगर तुमको बस पैसे के लिए आईबी में आना है तो तुम उसमें भी नहीं टिक पाओगे। ऑनेस्टली यू मस्ट लव व्हाट यू डू। ऐसा। Okay, thank you. Okay, Vivek, you may ask. Hi Abhishek. Hi, Actually, Vivek. once I've seen the investment banking tag near your name, I've searched your profile in LinkedIn and I've sent you a connection. Key, I've seen that you have completed your CFA level 1. Yes. Yeah, when did you do that? Like, at which stage of your career? I did it when I completed 1 year of my articleship. So on 26th of August, I started my articleship, and on the next year, 27th of August, I had my exam. तो ऐसा 1 साल में दिया था। Yeah, BDO has a separate department like investment banking. Other big fours has a separate department or what? BDO has an investment banking team. GT has an investment banking team. EVA has a valuation team. GT has a valuation team. I'm not sure about KPMG and Deloitte. PwC has a valuation team as well. Abhishek, actually, I've seen other people from LinkedIn. They are actually doing their industrial training in Morgan and McKinsey. Is it really worth until like should we do industrial training for must if you want to get a job in investment banking or portfolio manager jobs or वगैरह? इंडस्ट्री में क्या चल रहा है कि if you see companies like JP Morgan and all, they are very good in terms of their pay and all, but वहाँ पे तुमको देखना है कि तुमको रोल भी क्या मिल रहा है। जैसे आई हैव अ फ्रेंड इन जेपी मॉर्गन जिसका क्रेडिट एनालिस्ट का बहुत अच्छा रोल है, एंड आई हैव अ फ्रेंड इन जेपी मॉर्गन जिसका हेज अकाउंटिंग का रिपोर्टिंग रोल है। सो ऑफ कोर्स क्रेडिट एनालिस्ट का जो रोल है इट इज वेरी मच सुपीरियर देन अ नॉर्मल अकाउंटेंट ऑफ अ हेज फंड। सो यू मस्ट look into the role that you are getting into industrial training, not just the name. Yeah, Abhishek, thank you. And actually, one more question. Like, is it necessary to do specifically in investment banking to get a job in investment banking companies? No. I think audit experience would help you in case if you don't get investment banking articleship as well, because you are learning financial analysis.
but side by side you should be relevant, as I said, knowing about things what is happening and not. Yeah, thank you, Abhishek. Okay, we'll take 2 or 3 more. Ridhima, you may ask. Ridhima, are you there? Otherwise, Krishna. Hello. Am I Yeah. audible? Yes, yes. Yeah. So my question was, how did you see it? Like when I saw my student club ka Abhishek Wang investment banking, because we mostly see it in industrial training, right? So for the first year, how did you see the vacancy? Because BDO also, I think mostly we see stat audit, internal audit, taxation vacancies only. So how did you apply for it? ऑनेस्टली इफ आई से, मैं तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के इंटरव्यू के लिए गया भी नहीं था, मैं गया था वैल्यूएशन के इंटरव्यू के लिए, बट वहां पे इंटरव्यू में उनको ट्रांसफर केस नहीं चाहिए था. सो आई टोल्ड एचआर की ऐसा ऐसा सीन है. सो दे वर लाइक कि इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में एक ही वैकेंसी है, सो डू यू वांना गिव इट अ शॉट. तो आई सेड यस. तो फिर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का इंटरव्यू आता, पहले मेरा वैल्यूएशन का इंटरव्यू था. तो इट हैपेंड बाय फेट, आई वुड से, इन माय केस एटलीस्ट. बट अभी आफ्टर आई ज्वाइंड उन्होंने वैकेंसीज तो पोस्ट की थी, जैसे 2-3 टीम से इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की. तो उधर तो दे पोस्टेड ऑन लिंक्डइन की वैकेंसी है एंड ऑल. सो यू शुड बी स्विफ्ट इनफ कि वैकेंसी है तो लगेच अप्लाई कर दो. Is it in Mumbai only, or is it available in other places also? Like, I guess Mumbai and Delhi has more options in terms of these fields than other. That's my personal opinion. okay, okay. Thank you. And I had one last question about industrial training only. So obviously you said ki, you have to focus more on your profile, like what profile you get in those banks. So for this, what do you think that a big four is better or mid-size is better, like the finance firms? Because obviously there you get like more to learn in comparison. आई वुड आंसर इट इन 2 पार्ट्स. अगर तुमको जाके आगे जॉब ही करना है तो आई वुड से गो इनटू बिग 6. अगर तुमको आगे जाके इफ यू आर यू वांट टू डू योर प्रैक्टिस देन यू कैन शिफ्ट इनटू अ मिड साइज फर्म. अगर तुमको सभी प्रैक्टिस करना है, अगर तुमको प्रैक्टिस में भी एक ही फील्ड करना है तो देन बिग 6 इज गुड, आई वुड से. और अगर तुमको फाइनेंस का ये चाहिए, फाइनेंस का प्रोफाइल, देन एनी फर्म वुड वर्क. मुंबई में बिग 6 में 3 ही लोग आया करते हैं, बट अदर देन दैट मुंबई में देयर आर 8-9 फर्म्स जो वैल्यूएशन या आईबी ऐसे रोल्स में हायर करते हैं. Okay, thank you. Okay, we'll be taking the last question of Krishna. Yes. Hello, Abhishek. Would you recommend doing articleship in investment banking or go for the industrial training? एनीथिंग वर्क्स. अगर आर्टिकलशिप में मिल रहा है तो अच्छा है, नहीं तो फिर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में लो. ओके ओके. बट फिर ऐसा है, तुमको खुद के मन से, ऐसा नहीं कि सब कर रहे हैं या तो बहुत ज्यादा. हाँ, वन मोर थिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सुन के लोगों को बहुत फैंसी चीज लगती है कि क्या है क्या नहीं, बट इट इज नॉट वेरी मच फैंसी जितना बाहर से लगता है. तो जस्ट बिकॉज द सेक ऑफ इट बीइंग फैंसी यू मस्ट नॉट गो इनटू इट. Yeah. Okay, I have request. मतलब किसी की request आई है सचिन that he wants to talk with sir. So please, okay, last one. Okay. Hi Abhishek. मैं मतलब इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जैसे बहुत सारे डोमेन्स होते हैं. इक्विटी रिसर्च, जैसे रिसर्च में एक इक्विटी रिसर्च आ जाएगा, वैल्यूएशन, एफडीडी, बहुत सारे कंसेप्ट आते हैं. तो वहां पे जाके हमको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में से एक चूज करना है, या इन्वेस्टमेंट बैंकिंग बोला तो फिर क्या होगा उधर, मतलब वो नहीं कंफ्यूज हो रहा था. इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, इक्विटी रिसर्च और जो तीसरा नाम बोला, वो तीनों अलग अलग चीजें हैं. As I said, investment banking क्या है? It is nothing like, it is just like a broker. Equity research में you are doing into public markets. Investment banking में mostly तुम private markets में कर रहे हो. So both are different thing. ऐसा तुमको select करने का क्या अलग चीज है, select करने का ही मौका नहीं मिलेगा. जी. और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में इन फाइनेंस डोमेन वी यूजुअली गेट बैक ऑफिस वर्क, मींस मिडल ऑफिस का चांस कम होता है और फ्रंट ऑफिस तो मिलता ही नहीं है. हाँ, है ना. तो मिड मिडल ऑफिस मिलता है. ऐसा ऑनेस्टली आई वुड से कि मेरे टीम में मिड बैक फ्रंट ऐसा कुछ है नहीं. टीम ही 8 लोगों की है, जो काम है सभी कर रहे हैं. जी. तो अभी जैसे हमको
आगे चल के ऑप्शन मिलेगा कि हम रीजनल इन्वेस्टमेंट बैंक में जा सकते हैं, या फिर या जेपी मॉर्गन मॉर्गन स्टैनली जैसे बड़ी फर्म्स में भी जा सकते हैं। तो हमें किस में जाना चाहिए, क्योंकि रीजनल में अगर हम जाएंगे सो ये तो हम बहुत अच्छी बात है, आई वुड से, बट फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू इनकलकेट द स्किल्स एंड ये देन दिस इज टू डिस्कस लेटर कि किस में जाओ, ग्लोबल में जाओ, प्राइवेट में जाओ, और इसको और 2-3 साल आगे की बात है ये। सो आई वुड से राइट नाउ फोकस ऑन व्हाट यू आर डूइंग, ऐसा डोंट लीप फॉरवर्ड एकदम से आगे। ओके, थैंक यू। एंड मुझे कुछ फर्म्स जानने थे, मतलब इस फाइनेंस डोमेन के लिए कुछ 5-6 फर्म का नेम बता सकते हैं आप, जो जहां हम मैं अप्लाई कर श्रुति सके? को मैसेज कर दूंगा, शी विल पुट इट इन द ग्रुप। ओके, ठीक है, थैंक यू सर, इतना ही पूछना था, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके ओके, थैंक यू। Okay, thank you so much, Abhishek. कि मतलब you are having a very busy day at Vikasa, I know. So sparing this time and coming here for my student club, it means a lot to us. Thank you so very much. No, thank you, thank you. My friends are teasing me from background, but that's fine. Okay, it's okay. Okay, sure. Okay. Thank you for Thank you so having me. much. I had great fun. Okay, bye. Bye. Yeah, over to you, Purva. So moving on for the next domain, we have with us Vivek Bansal, who is very active on the LinkedIn with the follower count of more than 15.5K, and he is currently working at SS Kothari in the internal audit domain. And also he has been helping hands to many of the students. He has helped many students with respect to the vacancies, and well, he helped many students. He's also the part of the My Student Club as an opportunity officer. So, Team MSC welcomes you, Vivek. थैंक यू पूर्वा एंड सृष्टि फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी। और मैं सही बोलूँ तो मेरे को बहुत डर लगता था आगे बोलने के लिए। मेरे को पदम ने बहुत वो किया मोटिवेट कि तुम आओ बोलो। मैंने उनको तो 5-6 जनों का नाम भी बताया था, मैंने कहा भाई इनको ले लो। तो मैं थैंक्स करना चाहता हूँ एमएससी का कि आपने बढ़िया अच्छी अपॉर्चुनिटी मेरे को ऑफर की है, और मेरे को लाइफ टाइम याद रहेगा कि मेरा फर्स्ट सेशन एमएससी पे है। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। So Vivek, what exactly does articleship in the internal audit domains look like, and what practical exposure do we need to do? Internal audit is a different field. Means a student can feel after the 5 month or the 6 month मैं सीए क्यों कर रहा हूँ, माइंड में क्वेश्चन आता है। बिकॉज वी हैव लैक ऑफ टच फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, नो टैक्सेशन प्रोविजंस भी हमारा इतना काम नहीं आता, कंपनी लोग भी हमारा काम कुछ अलग ही तरीके का हो जाता है। तो सबसे पहले माइंड में से ये आता है कि भाई मेरे को इंटरनल ऑडिट में जाना क्यों है। जैसे मेरे साथ हुआ ये था कि मैंने कजन ब्रदर को देखा कि वो इंटरनल ऑडिटर था, उनकी लाइफ बड़ी चिल है। तो मेरे को आइडिया नहीं था, मेरे टाइम उतनी गाइडेंस भी नहीं थी कि किस में जाना है। तो मेरे को था कि कोई भी फील्ड मिल जाए, कोई भी कंपनी मिल जाए, मैं चला जाऊंगा। तो मैंने 27 अप्रैल को भैया को बोला कि भैया मेरे को कंपनी चाहिए। तो 28 को मेरे को एसएस कोठारी में मिल गया था अपॉर्चुनिटी। तो मैंने इसके ज्वाइन किया। अगर आपको जानना है कि इंटरनल ऑडिट में होता क्या है, मेरे पास एक शीट है और 5 से 10 मिनट लगेगी, आपको एक पूरा प्रोसेस ही बता देता हूँ। क्या मेरी शीट विजिबल है? Yes, visible है। जैसे इंटरनल ऑडिट में होता क्या है, जैसे अभी आपके सामने एक शीट है, वो ह्यूमन रिसोर्स प्रोसेस की है। उसके अंदर जो जो हमने डेफिशिएंसीज फाइंड की है, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि इंटरनल ऑडिट में हमें करना क्या होता है। जैसे सबसे पहले है लिखा हुआ है कि टाइम गैप, कि हमें टाइम गैप मिला है कि जैसे कंपनी में कोई बंदा एंटर होता है, सबसे पहले होता है गेट पे टाइम का रिकॉर्ड। फिर जब हमारी बायोमेट्रिक होती है, तो उनके बीच में टाइम का बहुत ज्यादा गैप हो जाता है, कि मतलब वहां से मैक्सिमम 10 या 15 मिनट लगने चाहिए, बट एक बंदे को लग रहा है आधा घंटा। या बायोमेट्रिक हो रही है 9:05 की, बट गेट पे 9:10 है। तो ये तो उल्टा केस हो गया ना। तो इस चीजों का हो गया कि मतलब हमें नॉन ऑपरेशन फंक्शन भी देखने पड़ते हैं कि कंपनी के ऑपरेशन फंक्शन कैसे काम कर रहे हैं। कंपनी में हायरिंग हो रही है तो हायरिंग किस तरीके से होती है, डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर है क्या नहीं है। अच्छा, फिर कंपनी ने जैसे क्या होता है कि इंटरव्यू लिया, इंटरव्यू में बाइसनेस तो नहीं हुई है, कि जैसे कोई पर्सन है, कोई रेफरेंस वाला है, उसने क्वेश्चंस भी नहीं दिए और वो 2 लाख रुपए ज्यादा भी मांग रहा है सिटी एक्सपेक्टेशंस में, और दूसरा पर्सन है वो कम मांग रहा है और उसने इंटरव्यू भी अच्छा दिया, कभी उसको रिजेक्ट तो नहीं कर दिया, तो इंटरव्यू के बाद स्कोर होता है। अदर देन हम इसमें ये भी देखते हैं कि सिक्योरिटी कंप्लायंसेस का हमने प्रोविजन किया है क्या नहीं किया, जैसे फुल एंड फाइनल सही हुआ है क्या नहीं हुआ, उनके पीएफ कैलकुलेशन सही हुई है कि नहीं हुई है। तो इन शॉर्ट अभी इतना ही ठीक रहेगा। मतलब इंटरनल ऑडिट में मैं कहना चाहता हूँ
कि आप खाली फाइनेंशियल फिगर से नहीं, आपका मेजर पार्ट रहेगा ऑपरेशन फंक्शंस। अगर आपका इंटरेस्ट है कि एक बिजनेस ग्रो कैसे करता है, कि अगर एक कंपनी इतनी बड़ी बन गई है वो कैसे बनी है, परचेज होती है कैसे होती है, क्वेश्चंस आते हैं माइंड में कि कंपनी ने कोई एसेट खरीदी 10 करोड़ की, भाई उसको 10 करोड़ की एसेट की जरूरत क्या है, क्या उसके पास कोई पुरानी एसेट थी क्या नहीं थी, इस टाइप के क्वेश्चंस। अगर पुरानी एसेट से काम चलता है तो उससे क्यों नहीं चलाया, उसको ठीक क्यों नहीं करवाया, मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपको बिल्कुल झील है कि आपको बड़ी अच्छा लगता है कि मेरे को क्यों के आंसर का रीजन जानना है, अदर देन मेरे को कुछ सीए फील्ड का काम करना है, हाँ सीए फील्ड का इंपॉर्टेंस आती है, इंटरनल में सीए को बड़े प्रेफरेंस दी जाती है, क्योंकि हमारे पास टैक्सेशन की थोड़ी बेसिक नॉलेज होती है, हम एक्ट्स को अच्छे तरीके से रीड कर सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं, और भी चीजें होती है, बेनिफिट्स मिलते हैं, और हम कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को टैकल कर सकते हैं, और डेली आपको क्लाइंट से बात करने का मौका मिलेगा। और बस मेजर ड्रॉबैक ये आता है कि आप लंबे टाइम तक प्लांट पे बैठे रहते हैं, कि मतलब लॉन्ग आपके आउटस्टेशन ऑडिट हो जाता है। जैसे इस टाइम मैं राजस्थान में हूँ, 2 महीने से रह रहा हूँ। सो इंटरनल ऑडिट में पेशेंस भी बहुत जरूरत होती है। पेशेंस काफी होता है, ऊपर से मैं कह सकता हूँ कि कुछ उल्टे सीधे लोग मिल जाते हैं, तो आपको उनको टैकल करने का एक वो होता है कि मतलब कैसे टैकल करूं, कि कई जने आपके ऊपर चींक पड़ते हैं, भाई तू मेरे पास ये क्यों आ गया लेके, तो आपको पहले प्यार से समझाना पड़ता है, भाई बैठो ऐसे ऐसे करके इशू है, उनको पूरा एक्ट समझाना पड़ता है, वो कहता है नहीं मैं 20 साल से काम कर रहा हूँ, मेरे को आता, तू यहाँ से भाग। ओके सो लाइक अभी ड्यूरिंग दिस होल प्रोसेस सिंस आउटस्टेशन भी होता है, तो हाउ यू मैनेज योर स्टडी विद द वर्क? रियली आई एम सेइंग दैट पहले मैंने स्टडीज को मैनेज नहीं करता था, बट अब सब मोटिवेट करते हैं, दोस्तों का बहुत फर्क पड़ता है स्टडीज में, बट वर्क प्रेशर इंटरनेट में कंपेरेटिवली बहुत कम रहता है। अगर मैं कहूंगा कि मैंने 9 बजे के बाद काम कभी किया ही नहीं है, 8 महीने हो गए मेरे को करते, 8 बजे मेरा लैपटॉप बंद हो गया तो हो गया, तो उसके बाद कभी नाइट नहीं होता, और मोस्टली संडे ऑफ ही रहता है, सैटरडे भी ऑफ रहता है, तो टाइम आपको डेली 3-4 घंटे की क्लास लगाने का मिल जाता है, अगर आपकी मन है लगाने का तो स्टडीज में कोई आपको चैलेंजेस फेस नहीं करने पड़ेंगे। सो बेसिकली वीकेंड्स पे स्टडी कवर अप हो जाती है इंटरनल ऑडिट में। So now the next question is how to prepare for the interview and what common questions they can ask for this internal audit domain. ओके देखो, इंटरनल ऑडिट एक ऐसी फील्ड आ गई कि उसमें कुछ चैलेंजेस आ जाते हैं, कि मतलब वो आपसे कुछ पूछना चाहता है, वो पूछ नहीं पाता, क्योंकि एक लिमिटेशन आ जाती है कि एक बच्चे को इतनी नॉलेज नहीं होगी प्रोसेस की। तो सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अभी जैसे मैंने लिखे हैं, एक गर्ल से बिग 4 में पूछे थे, व्हाट इज इंटरनल ऑडिट, व्हाट इज इंटरनल कंट्रोल, डिफरेंस बिटवीन स्टैट्यूटरी एंड इंटरनल ऑडिट, लाइक दिस बेसिक स्टफ। Okay, so बेसिक से स्टफ पूछते हैं जो हम ऑडिट में भी रीड करते हैं, बट राइट? सो इसमें नेक्स्ट, हाँ, चैलेंज एक आता है, जैसे डिफरेंस बिटवीन स्टैट्यूटरी ऑडिट एंड इंटरनल ऑडिट पूछा जाता है, तो बच्चे क्या करते हैं, बुक का चिपका देते हैं जो 4 पॉइंट दिए होते हैं, बट इंटरनल ऑडिट के इंटरव्यू में ट्राई करो मैक्सिमम एग्जांपल्स देने का। okay, so next is like any skill or any prerequisites जो चाहिए हमें इंटरनल ऑडिट डोमेन में आने के लिए या आर्टिकलशिप में आने के लिए, कोई ऐसे स्किल की जरूरत है हमें? अगर मैं सीरियसली बताऊं, मैंने खुद एक मास्टर क्लास ली थी और मेरे को अब समझ नहीं आ रहा है क्यों ली थी, मैंने 600 रुपये खराब कर दिए, क्योंकि इंटरनल ऑडिट ऐसा नहीं है कि आप कोई कोर्स करके सीख जाओगे, आपको इसलिए प्रैक्टिकली जब तक नहीं हाथ डालोगे नहीं समझ आएगा। कुछ नहीं, बेसिक स्किल्स कुछ नहीं है, रिस्क असेसमेंट आनी चाहिए, थोड़ा आप आपका सीवी अच्छे वेल ड्राफ्टेड होना चाहिए, सीवी में 2-3 वर्ड्स होते हैं, उनको अगर आप इनबिल्ड कर दोगे तो वो आपका इनफ ही है। तो ऐसे मतलब कौन से वर्ड्स है जो अभी आपने बोला, तो क्या कैसा होना चाहिए सीवी प्रिपरेशन, लाइक कि हाँ इंटरनल ऑडिट के लिए सुटेबल हो? जैसे आपका रिस्क असेसमेंट हो गया, थिंकिंग एबिलिटी हो गया, टीम लीड हो गया, चैलेंजेस फेस करने हैं, कुछ इस तरीके के कीवर्ड्स होते हैं, वही सफिशिएंट रहते हैं, कोई कोर्सेज का वो डिमांड नहीं करते हैं। ओके, सो आपका वर्क एक्सपीरियंस कैसा रहा पूरा इंटरनल ऑडिट डोमेन में? अभी तो मैं लिटरली बहुत इंजॉय कर रहा हूँ 8 महीने से, और मेरा स्विच करने का भी मन नहीं कर रहा। आपका क्या सजेशन है फॉर दिस कि इंटरनल ऑडिट में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, और जो मिसकंसेप्शंस है उनके बारे में? इंटरनल ऑडिट में अगर आपको टॉप की फर्म्स मिल रही है, आई विल सजेस्ट कि अगर टॉप 10 है तो आने में कोई बुराई नहीं है। अगर अदर देन टॉप फर्म्स हैं, उसमें अगर मैं कहूँ सिर्फ फॉर्मेलिटी ही होती है,
तो रेफरेन करो इंटरनल ऑडिट से। इंटरनल ऑडिट और स्टैट ऑडिट ये दो ऐसी फील्ड है, अगर आप टॉप फर्म से करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ओके सो आप कोई ऐसी एक चीज जो बोलना चाहोगे स्टूडेंट्स को, लाइक एनी एडवाइस और एनी सजेशन फ्रॉम योर साइड टू द स्टूडेंट्स? देखो, अगर सबके मन में क्वेश्चन आता है कि मैंने इंटरनल ऑडिट क्यों लिया, मेरे साथ भी सेम केस था। मेरे को टैक्स से डर लगता था कि टैक्स में तो मेरे को जाना ही नहीं, तो इंटरनल में अपॉर्चुनिटी में मिली, मैं इंटरनल में आ गया। बट ऐसा नहीं है, डरना नहीं चाहिए किसी चीज से भी। उसके बाद अब टैक्सेशन का भी हम काम करते हैं। टैक्सेशन के मैंने आप बैठ के लेक्चर्स लगाए थे एक बार, कि मतलब हर फील्ड को अपना इक्वली दो और सबकी बेसिक नॉलेज रखो। टीडीएस, टीसीएस, पीजीपी, ये बहुत काम का चैप्टर है इंटरनल ऑडिट में भी। तो अपना रिलैक्स हो, अपना अच्छे तरीके से हो जाएगा क्लियर, रिजल्ट की भी टेंशन नहीं लेना। ओके सो एनी क्वेश्चंस फ्रॉम द स्टूडेंट्स? मेरी बारी में कोई नहीं है लगता है। ओके ओके तनीषा, यू मे आस्क। नहीं है, बच्चों को जानना है। यस। Hi, sir. तनीषा, आर यू देयर? Yeah, hi, हाँ, sir. ओके तनीषा। सर एक्चुअली मेरा ये क्वेश्चन था कि ये मिथ होता है बच्चों का जनरली कि इंटरनल ऑडिट में स्टूडेंट इतना सीख नहीं पाता एज कंपेयर टू अदर डोमेन्स, तो ये हाउ ट्रू इज दिस? ये ना हमारे ऊपर भी होता है। जैसे अभी मैंने कहा है कि मेरे को टैक्स से बहुत डर लगता था, और मैंने 6 महीने टैक्स का कुछ भी नहीं खोल के देखा। टैक्स का काम मैं अपने कलीग्स को दे देता था, भाई तुम करो, मेरे को टैक्स से डर लगता है। तो वो मेरे अंदर ही ड्रॉबैक आती गई थी कि मैं टैक्स से डरने लग गया था। अब मैंने चैलेंजेस लेने स्टार्ट किए हैं, तो मेरे को काफी इंटरेस्टिंग आता है। तो ऐसा नहीं है कि तुम हर चीजों से पीछे रहोगे। इंटरनल ऑडिट एक ऐसी फील्ड है जिसमें तुम्हें खुद को पुश करना पड़ेगा कि भाई मेरे को सीखना है तो मेरे को करना है, और सब डाटा आपके पास होता है। सर जैसे आप एसएसकेएम में हैं, तो इसमें इंटरव्यू प्रोसेस में कितना टाइम लगता है? इसमें इंटरव्यू में 2 दिन से 1 हफ्ता। और मतलब ऑन बोर्डिंग प्रोसेस कितना लंबा होता है लाइक? देखो, जब हमारा टाइम था तो स्टाइपेंड भी थोड़ा कम था, तो जल्दी हो जाता था। अब स्टाइपेंड इंक्रीज कर दिया, तो मेरे को सुनने में आया था कि काफी देख के ले रहे हैं बच्चों को। सर सॉरी टू आस्क दिस, पर आपका स्टाइपेंड कितना है? ये बात डिस्क्लोज ना की जाए ओपनली, सही रहेगा। एज पर आईसीआई नॉर्म्स सर प्लीज। 4K। ओके सर, थैंक यू सो मच। यस। ओके अथर्व, यू मे आस्क। हेलो, हाय विवेक। ये जो इंटरनल ऑडिट है बेसिकली रिस्क एंड एडवाइजरी भी यही है, और इसे रिस्क क्योंकि एडवाइजरी, लिंक्डइन के इंटरनल ऑडिट, रिस्क एडवाइजरी, इंटरनल ऑडिट, बिजनेस कंसल्टिंग, ये टर्मिनोलॉजीज है, बट मोर एंड जी लेस सिमिलर ही होते हैं। ओके, तो मतलब जब मैं इंटरनल ऑडिट को रेफर कर रहा हूँ तो ये टीम मतलब ये इसके अंदर पार्ट है या एक सिनोनिम वर्ड्स हैं ये? टर्मिनोलॉजीज है, नोमेनकल्चर। ओके, थैंक यू। सचिन, you may ask. Sir, what factors we can consider to decide whether to go for internal audit or statutory audit, or which is better for finance domain? In future, we देखो, have to switch to finance. if you have to go in a particular finance domain, then go for the stat audit. And if you are open Okay. to any field, then pick any in a top form likewise. Okay. Thank you, sir. Oh, thank you, Bia. Okay. Next, Vivek, you may ask. Yeah, hello Vivek. Hello Vivek. Actually, my question is like, I'm from Andhra Pradesh, Guntur, and actually we here have paid the exam fees and everything for degree college, and actually I'm doing regular degree. But the point is, I really don't need to go into the college. Like they'll manage everything. So is it necessary for me to disclose in the resume? Like I'm doing regular degree, but I need not go to the college. So there is nothing to do with them, like big four का people, विवेक, right? So इसके बहुत इफ एंड बट आते हैं। सॉरी, मैं इसको ओपनली डिस्क्लोज नहीं कर सकता।
Okay, so is it a yes? मैं कहता हूँ इसके बहुत इफ एंड बट है, कुछ चीजें ऐसी हैं कि लॉ के प्रोविजन, आईसीए के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग भी होती है और अगेंस्ट भी होती है, तो आई थिंक दैट इट इज नॉट राइट टाइम टू डिस्क्लोज। Okay. बट अगर आप Vivek, रेगुलर कॉल you may ask him on LinkedIn. यस Okay. And Anamika, one you may one ask. more thing. Sorry. Yeah. Speak. Yeah, Vivek, this is nothing about like not relating to this session, but why doesn't people accept connections in LinkedIn? सॉरी, कैन यू प्लीज रिपीट? I mean, people are not accepting connections in LinkedIn. There is any specific reason like? ये तो सिर्फ फर्म के पार्टनर के साथ होता है, उसके अलावा मैंने कहीं नहीं सुना है। Okay. कर लेते हैं, So please टाइम accept लगता my है। connection then. एक मेन क्या होता है कि लिंक्डइन पे कई जनों की ना फोटो लगी होती है ना कुछ पोस्ट होती है, तो अपने लिंक्डइन को थोड़ा सा बेटर बिल्ड करो। अब माई स्टूडेंट क्लब है अपना, वो लेके आते हैं मास्टर क्लास, तो एक रीजनेबल रेट है जो मैं कहता हूँ कि हर एक को करना चाहिए ज्वाइन। उसमें लिंक्डइन के लिए इन्होंने स्पेशल रखा है, तो आपको सब कुछ गाइडेंस ये प्रॉपर प्रोवाइड हो जाएगी वहां पे। Okay. Thank you, Vivek. जी। Anamika, you may ask. Hi Vivek, how did you approach SSKM and are tax questions asked in the interview? I have answered the second question that test question is not asked. Not even TDS, PGVT, etc. Not in my case, but TDS thesis was asked in a Big Four, especially in GT. Other than Big Four, GT ask from tax, stat, IA, means they are open to ask anything. Okay, and how did you approach to SSKM? By In my reference case, or I took a reference. I took a reference from my cousin brother who earlier worked in SSKM. Okay, But now and it is yes. now I'm saying that now there when vacancy is open, apply. 99% chance you will receive a call. Okay, and does the reference from article makes a difference? Like if article forwards the resume to HR? No difference. More and less similar because some articles have a good relation with his manager or partner. It depends upon article to article. I see one case where article has approached helped one another person in a Big Four also. Within a 1 week, she got selected. And one more question, like if, like for example, if a firm has different branches, like in Noida, Delhi, and other places, and can we apply in different branches because every branch has different HR, so can we apply at all other branches in the same firm? Yes, you can try. That doesn't matter. Okay, thank you so much. Okay, so we will be taking last one. Harsh, you may ask. हेलो विवेक। हेलो हर्ष। मैं बहुत जनों से सुना हूँ कि समझो मैं आर्टिकलशिप है, इंटरनल ऑडिट है, डोमेन में किया हूँ, लेकिन सीए क्वालिफाई करने के बाद समझो मैं मुझे डोमेन चेंज करना होगा तो मुझे बाकी डोमेन में अच्छे अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलते, ऐसा सही है क्या? कुछ चैलेंजेस आते हैं क्योंकि देखो अगर आप स्टैट्यूटरी ऑडिट करोगे आप इंडिया से भी कनेक्टेड रहते हैं, टैक्स से भी कनेक्टेड रहते हैं, बट इंटरनल ऑडिट से आप हट जाते हैं सब चीज़ों से, तो थोड़े चैलेंजेस आते हैं, बट आप फाइनल की स्टडी में सब कवर अप करके एवरीथिंग इज डिपेंड अपॉन इंटरव्यू। कुछ जने ब्लेम करते हैं कि मेरी आर्टिकलशिप अच्छी नहीं है, मैंने डोमेन गलत ले ली, बट एक्चुअली होता क्या है उनको का फाइनल कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर नहीं होते हैं। अच्छा, थैंक यू। Okay. Okay, so guys, thank you Vivek for your time, and guys do connect him on LinkedIn. He's sharing so much of the vacancies, and also he's helping out the many students. Thank you so much Vivek. थैंक यू पूर्वा एंड सृष्टि, एंड मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा कि प्लीज माय स्टूडेंट क्लब की मास्टर क्लास को ज्वाइन करना, क्योंकि मैं खुद फील कर सकता हूँ कि मेरे को कुछ भी नॉलेज नहीं थी, अगर पता होता काफी चेंजेस मैं चेंजेस कर सकता था। तो आप सभी को ये माय स्टूडेंट क्लब इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है, तो प्लीज ग्रैब इट। थैंक यू।
over to you, Shishti. Thank you, Yeah. Vivek. Okay. So stealing 2 minutes here from Purva, I would like to tell you guys कि registration forms are out. You can form the registration link for our Articleship Masterclass in our chat and on every social media platform of My Student Club. हम वहाँ पर links डाल देंगे. It is flat 499 rupees and also we are planning to give a no answers or no questions money back policy. If you don't find कि हमारे ये 10 days master class की वजह से you have got any improvement, we are ready to give you all your money back. So I request you all to join and also जितने भी आपके friends हैं आप उनके साथ भी share करिए because you know like many of the speakers told कि जहाँ पे अगर आपका technical knowledge उतना strong नहीं भी आता है your communication skills play a very important role to impress the interviewers. So communication skills, सारे technical related aspects for each and every domain, फिर Excel हो गया and all the other MS Office stuff, and also LinkedIn plays a very important role when your interviewer, anyone who is doing your background check, they may go and search for your LinkedIn profile. So you must start your personal branding. LinkedIn पे जितना ज़्यादा content हो सके डालो ताकि लोग आपसे connect कर पाए and how to approach people for references, email etiquettes, how to draft your resume, everything in this 10 days. The class will be starting from 15th January to 24th January and 10 days का पूरा program रहेगा. The PDF will also be shared with you guys. So I request you all to join in and register for the Articleship Masterclass. It's just rupees 499 and trust me guys, less than 50 rupees per day, and we are promising you some of the speakers who are prominent in each and every areas will be there to guide you and improve your skills. So I hope you all join and enjoy the masterclass. Over to you, Purva. Okay, so guys, link is there in the chat box. Go and register yourself. And let's move. We have with us Abhay Gupta, who has previously worked in a mid-sized firm in the indirect taxation domain. And he is the co-founder of the Grefs GST, where he shares the knowledge on GST. And he is currently pursuing his industrial training at Flipkart. So Team MSC welcomes you, Abhay. Thank you, Purva. It's my honor to be here, sharing my insights about articleship experience. Whatever I have gained in my articleship period, I'll happy to share with all of my fellow CA mates. So I'll be happy. Thanks for this opportunity. Okay, so Abhay, let's move on. What exactly does your articleship in the indirect taxation domain looks like, and what practical work you need to do there? So I would tell you firstly, I would like to bust biggest misconception that most of the CA intermediate students have, that indirect taxation is just basically about filing return. So it is not like that. Indirect taxation covers, it's a very vast field apart from just filing returns. So I will cover one by one. Basically, the kind of work that indirect taxation covers is you might also you might have heard, like, firstly is litigation. Litigation is all kind of show cause notices, appeals, investigations that company faces. Like GST department conducts regular these assessments for various companies and all the assessees, you can say. And also the second kind of work that you might have heard is the advanced ruling. You might have learned in GST. So advanced ruling is basically uh, what companies do is they just apply to the department, the GST authorities, to get a upfront clarification on particular tax implication. For example, should they apply on their business product, should they apply 18% GST or 12%? So they get earlier judgment from the GST department. So that is called filing an advance ruling from advance ruling. So that kind of work also comprises in GST. Other than this, there are also classification related issues. For example, there are various the products. The GST rate for a particular product is defined on the basis of HSN codes that we have, right? So particular product might be covered in two different HSNs. So that kind of classification related
disputes also is covered in under GST. Apart from this, there are various representations that have representations related to like what we do as a firm. We provide our clients with services to represent them before the GST authorities, directly to the GST authorities. So in that, what we do is we talk with the Ministry of Finance, like to the representative. There's a specific body in the Ministry of Finance which deals with the specific issues. So we take our issues of our clients to directly to the ministry. So that kind of work is also involved in GST. So this is all about GST in indirect taxes. Apart from this, in indirect taxes, there are also custom related works. So customs also same kinds of work, investigations, advance rulings, classification related issues, and also advisories we used to give to reduce custom duties or like that kind of import export matters. So there are various litigations that shipments has been confiscated by various custom officials. So that kind of advisories also we just type of analyze law we gave them advisory based on the opinion we gave based on the interpretation of law. So like that kind of roles also we fulfill as a firm. So apart from this, also there's business restructuring kind of a role in that we structure the particular business transaction for clients in such a ways to reduce their tax costs, like indirect tax cost, for example, custom duties or GST. We help them in reducing those costs, because if you see indirect tax is around GST is around 18% in most of the products, right? So we help them to reduce it to substantial to like to either by through input tax credit or through structuring various deals, like so in that way also we help our clients to solve the business problems. Apart from this, if you say there's also foreign trade policies which is covered in indirect tax. So under foreign trade policies, we advise them to from where to import or various policies that we government has from particular countries. For example, that you might have heard that India have DTAA with various countries, right? So in that also there are various customs relief, import duty reliefs that we have given, government has given in that agreements. So by that agreements also we help clients to from where to import and how much quantity, or if there's specific condition that this conditions you have to fulfill or you have to maintain this end use, like the good imported should be used like in this way only. So that kind of advisory also we used to give to our clients. So all kind of works is covered. So you can say that if GST is very vast profile, and there are various sub profiles under GST under indirect taxes. I mean, GST, customs, FTP. So it's quite a vast profile if you go into it. But the thing is, not every of the firm give you this kind of exposure. These most of the firms, mid-sized firms, small mid-sized firms, they generally have only return filing as their work with them. So that is why most of the CA intermediate pass outs are not aware of these kinds of nitty-gritties in this profile. So basically, since I have worked in this profile, I get to know about this. So it's good, like okay, if you all guys are knowing currently that you may be in the right position to make a decision, like whether GST is not about just the return filing. Yeah. Okay, so since GST is not only return filing, but still many firms are providing that only. So like how you manage your work with the study? क्योंकि like I also saw the people sitting late at night, CA due date say, वो due date say. So like how you manage your work with the study? Yeah, so like 11th and 20th, these 2 days are almost fixed for us. These would be, you have to work around 12, 11. These were the minimal timings that we used to work. And also during the annual returns, we have the late night shifts. Like whole night also we have worked sometimes. That kind of work pressures are there. But only that time. Apart from that, if there are only advisory related work,
So that time it's still like 6 to 7. That's it. So it's like if you are working just 2 3 days a week a month, so that's not that difficult to manage with along with studies. But yeah, it's hectic as compared to other in other profiles. You don't have any time limits. Like apart from income tax, you don't have time limits to fulfill. So that is because of deadlines. Used to have pressures. That's it. So yeah, it is manageable It's in the manageable. indirect So taxes. if correct. Studies are easily manageable. Just apart from that days, it's quite flexible. You have good time. Mm. Okay, so how to prepare for the interview of this particular domain? Like what questions they can ask you for this? So basically, CA interns, most of the firms do not expect that you might have expertise in tax or GST or customs. You might not have studied also customs. So they just test your basic skills like basic GST provisions like ITC provisions or RCM provisions. They test that only. And also some firms test your drafting or communication skills because that is what main thing is. You have to draft various opinions and advisories. You have to read tax laws, you have to interpret tax. So that kind of skills they used to test in interviews. So if you're good with basic tax provisions, if you know the basic GST provisions, and also if you're aware of how to draft, how to present yourself, basically like that you learn with just when you present answers in your CA intermediate or in your academics. So that is all that it needs to clear any of the interviews. I also have some of my friends at Big Fours also. So Big Fours also basically test only the basic provisions only. It's not that of a complicated preparation you need for GST. Just the basic provisions you have to be aware of. That's it. Okay, so any skill or prerequisites to get into this domain? Like what interview will see into you as a skill? Yeah. So basically, basically the basic drafting skills if you have, like you know how to present yourself, because GST is something like you might not have studied it's just 40 marks coverage in intermediate also, so you might not have read all the provisions. It's a quite a vast law, so you might not have learned most of the provisions also. So basic, if you know supply provisions and or RCM ITC provisions or registration related stuff, due dates and all, that's all what you need basically for cracking any interviews. So basically it depends upon if you are interested in this profile or not. If you are interested in taxation, then GST is such a profile that you will definitely like it because it is a growing profile. It has a huge potential, and also it's just 5 6 years like GST has been implemented, right? So its scope would drastically increase in coming years. So with that, I would say कि it's a good profile to work on if you are interested in it. Okay, so many students have this myth, or I don't know what it is, but do you frequently go out station for like in the indirect taxation field, or like how it works? So basically, we used to have some one activity called health check, in which what we do is we do the complete analysis of a business from the GST point of view, like whether company is complying every kind of provisions, in every activity. For example, procurement or say whether they are paying the right tax on on inputs, and whether they are discharging GST on particular all outputs, all wastages, all scraps, what all, basically what you guys do in internal audit also, right? So that kind of all complete health check we used to do. For that, we used to visit companies' premise and we used to understand their business activities. So I have 1 or 2 client visits during my articleship, but not that extensively as compared to in internal audit or stat audit. But yeah, you used to have a few client visits for just that kind of works if the firm has that kind of work.
So, like generally, people have this what you can say कि like indirect taxation में एक ही repetitive task है. So, what would you हाँ suggest them to enter in this field or not? Like, what do you feel कि big fours में indirect taxation में ज़्यादा opportunities है या फिर mid size में ज़्यादा मिलेगी? I would say कि that you have to inquire with the firm because what I have heard basically कि Big Fours में GST is all about return filing and they are not that of, they do not involve interns much in these kind of works. That is why I choose. I have also got an offer from PwC for indirect taxation only. I chosen this firm just because they assured me that I would be checking all the checklist that I told you, like advisory, litigation, all those kind of work I'll be covering in this articleship. So they assured me that. That is why I joined there instead of PwC. Because what I think is the indirect taxation, if we are just getting to learn returns, then it is not that of much good profile because return filing is something like accountants also used to know, right? So the thing to learn is these kind of work, like drafting or communication, interacting with government officials. If you are getting to do this kind of work with the tax authorities and meeting with tax authorities, then only it is like interesting profile to work on. So I would recommend to if you wish to go to this profile, you should definitely inquire with the firm that they have all kind of work with them. They have good clientele. They will provide you that kind of exposure. If it is if you are putting all the checklists, then only you should join a firm. Otherwise, this profile would not be that interesting, right? So, so any of the advisor suggestion you would like to give? So advices I would like to advices that is only if you are someone who is good with taxation, who likes to work on tax, or who I was the guy who does not want to go to audit because I didn't like audit and I think like audit is not what interested me, right? So that is why I opted for indirect taxation, and also indirect taxation is something like it is a growing profile, right? So I would definitely get good chance in future, and I can decide after getting completing my CA that whether I have to continue or not. But since it is a growing profile, I thought it would be good, and also the skill set that I acquired after this drafting skills and interpersonal skills, how to sit in big meetings, interacting with government officials. These kind of skills, like definitely, it will help me in my career. So that is why I joined for indirect taxation only. So that is it. If you are interested in all this kind of taxation stuff, then definitely indirect taxation. I'll recommend over direct taxation because direct taxation is something you have to. It's not that connected to that business, right? Because business is most about GST. Indirect taxation would be just about. Indirect taxation is mostly about business because you have to cover each and every transaction. It is from supply angle, and income tax is only on the income part. It is not a supply related tax. So that is why GST you get to know much more about businesses. Complete business you see when you're working in these kinds of all kinds of work, advisory, litigation. So that is why I preferred indirect tax over any other taxation streams. So that is it. And also, if you see career options after doing articleship in GST, so career options you can go for any of the big fours, or you can go to industry. Industry every industry company has their own in-house GST department. Also, they used to have. Also, there are good firms like Hirangangi Associates and who pays also nice in as compared to other profiles. GST is around 3-4 lakhs more than a stat audit in Big Four also. So its good pay scale is also good in indirect taxation. So I would say that if you're interested in taxation, definitely you can go for it. Okay, so now every one of you can ask the question, or whoever wants to ask, you may ask. Harsh, you may ask.
Harsh, are you there? Okay, let's take Sachin first. Sachin, you may ask. Okay, I think everyone is clear. हेलो आवाज आ रही है? Ha, yes, you are audible. Sir, IDT or DT, which is most preferable if we have option to go for any of one? So which is more preferable as per your advice and why? So I told you, basically DT is tax on your income, right? So income, you won't see complete business of any company. If you are doing also return filing, also if you can see, it's not like they just told you the uh, income side of that. This much income you have received, and in assessments also, there's no complete business cycle you would see. But in indirect taxation, it's on supply related tax. So every kind of transaction you have to inquire, you have to see whether they have charged appropriate GST or not. You have to understand the structure of it. If it is from the if the vendor has appropriate, if you have purchased something, if you have taken appropriate ITC or not, its nature of a transaction. For example, it's a capital related expense. So you have to, it's ITC is disallowed, right? So you have to, every transaction you have to analyze like whether it is a capital related expense or not, whether you will be eligible to claim ITC or not. So that kind of interpretation you have to analyze the taxation laws. So I feel personally कि indirect taxation gives you comparatively more business insights. Hello, am I audible? Ga? Ha, yes, now you are audible. Sorry, I guess some internet issues. Okay, so that is what I'm telling. Ki as compared to income tax, I prefer ki it would be more business oriented profile. So that is why I recommend over income tax, right? Means more operational learning of the business we will get in IDT as compared. Right, right. Okay, thank you, sir. Lavanya, you may ask. Hello. Are you there, Lavanya? Yeah. Hello. Yeah. Yeah. So hi, Abhay. So I was asking that, is there any sort of master class or any other resources that you would recommend to sort of brush up our knowledge on indirect tax? So there are basically one or two masterclass, I guess, from Thinking Bridge and all. I have not seen personally them, but if there's something like there, if I have not seen their curriculum, if there's teaching you how to draft something or like that kind of things, then you can opt for it. If it's just a taxation knowledge, then I don't think because we have already learned it in intermediate, right? If they just teach Yeah. you about law, then I don't think it is of any use. But drafting and all, how to present the opinions, and if they are teaching you that kind of thing, that would definitely give you an edge in an interview, in IDT related interview. Okay. And also one more question. So while I was searching for articleship opportunities, I saw that there are usually more direct tax openings as compared to indirect tax. So are there Mhm. any other routes that we can follow to apply for the same? So that is only the like every kind of profile referencing, and you can apply from LinkedIn. You can reach out to particular partners or employees. That kind of route only is same for every kind of profile in Big Fours or in any good firm. So Yeah. if you are not getting any openings, you can reach out to particular company firms, partners or managers. They might help you if there are vacancies, or they might also tell you if there are going to be any opening in some few days or not. So you Okay. can reach out to through LinkedIn only. That only we used to do. Okay. And also apart from that,
is the career opening on the website of the firm also sort of a good option to apply for the same? So Hireganga, I guess they used to post in their website. Hireganga is Yes. a good firm. If you are going for a mid-size firm, Hireganga and our firm CA Pritam Mahal and Associates in Okay. Pune. If you are from Pune, so like these kinds of firm are a renowned firm. Also Praviti, you can see, and Nitya Tax Associates. These 4 5 firms I would recommend. These are good in indirect taxation. If you want to learn all these checkpoints that I have told, because Okay. I have few of my friends in all these kind of firm, and I know they have all kinds of things. They provide you all kind of these exposures. Okay, understood. Thank you so much. Tanisha, you may ask. Hi, Abhay. Hi, Tanisha. So as you mentioned earlier that you have switched from a mid-sized firm to Flipkart, right? I mean to say that how smooth was your transition from a mid-size to a company? Like your previous principal allowed you to do industrial training easily? So during when I began my internship articleship, at that time only I informed my principal that something I don't think that I can learn more than 1.5 years, and I want to have some more exposure apart from indirect taxation during my articleship. Hence, I will be opting for industrial training. I clearly assured my principal in the beginning of my articleship. That is why I didn't face any issue with my principal. They clearly allowed me after my 1.5 years. And about my transition, so it is not companies in for industrial training. They don't have such criteria like before. Most of the companies don't have criteria like before or mid-size. If you're clearing their interviews and if you have that skill set like whatever they require in that interview, so if you're clearing that interview, so they will definitely prefer you. There's no much apart from BCG, I guess BCG have for they don't hire industrial trainings unless you have articleship from Big Four. So if you are someone from mid-size, you can still. I have many of my friends who are in good firms, good companies for industrial training, even after doing the articleship from a mid-size firm. So there's no kind of issue in transitioning from a mid-size firm. But the thing is, you have to have the skill set that they require, or you have to clear their interviews. That's it. Thank you, Abhay. Mhm. Okay, so thank you very much, Abhay, for sparing your time and telling about this kind of underrated domain. So thank you so much. And now over to Thanks, you, Purva. Varun. Thanks, Uh, Purva. Thanks, my students club. Thank It's you, our Abhay, and all pleasure. the speakers for sharing your amazing insights and helping the articleship speakers to understand their domains and also helping them solve their queries. In case you are left to question them, you can ask them on LinkedIn. We will share the LinkedIn IDs of all the speakers, and also we have shared the link of the articleship masterclass. You can join that and register it soon because the discounted price will be for just 2 days. And also we will share it on all the social media handles so you can join it and also share with your friends. I hope the session was insightful for you all. Thank you very much. Thank you, Purva and Srishti, for amazing hosting. Thank you so very much, audience, and thank you so much, Varun, for the mention. Yeah, thank you, Varun. Thank you so much for nice session. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you to the entire team of my student club. Thank you. Thank you so much.